Okay. Not
से 57,631। Yusuf Ansari, sir, are you online? Yeah, I'm online. All right. Welcome, sir. Dr. Rim will give a short introduction of you, then you will start your screen. Thank you. Yes. Good morning, Dr. Ansari. And Good morning, ma'am. on behalf of the innovations in fuzzy optimization, cybersecurity, and simulation in association with DRDO. It is my great pleasure to invite you to deliver a talk on the last day of our international workshop during the second session. It is an honor to introduce you as a distinguished scientist G in Defense Scientific Information and Documentation Center DRDO. You obtained BTech in Computer Science and Technology from IIT Roorkee, MTech in Software Systems from Birla Institute of Technology and Sciences, Pilani, and PhD in Computer Engineering from Jamia Millia Islamia, New Delhi.
He has 14 publications in international journal and conferences. He was responsible for design and development of wargaming and information system projects for Indian Army. His research area includes knowledge discovery and data mining, artificial intelligence and machine learning, cybersecurity, geographical information system, and software engineering. So, sir, please continue. Please. Thank you, madam. Thank you, sir. Your screen is visible. Visible. Yeah. Respected dignitaries on the dais and off the dais and dear audiences, good morning to you all. I am going to talk on web application security threats and defense mechanisms. So, outline of my talk would be that I will introduce the topic and importance of the topic. Since it is web application, so I will be briefly talking about the web applications, what is it and what is the architecture of the web applications. And since web applications are normally deployed on the internet, so security is very, very important aspect because nowadays a lot of hackers are there and day in and day out they are trying to penetrate the web application. So security is very important aspect. So there are various web application security standard at international levels like OS and science, etc. So I will be introducing these standards, and after that I'll be talking about the top 10 vulnerabilities of web application security threats. And then I will be briefly talking about the secure software development lifecycle because software development lifecycle is there, but in order to introduce the security aspect, which is non-functional requirement, so what modification need to be done in the software development lifecycle? And in secure web applications, in addition of the normal testing, alpha, beta, gamma, and stress testing, penetration testing is very essential component. So briefly, I will be talking about the penetration testing. Then, in addition to that, the development of the software deployment is also very important. So, because the application must be deployed in very, very secure environment where intrusion detection system, web application firewalls, etc. is there, and the concept of demilitarized zones is there. So just briefly talking about that, and then I will conclude my presentation. So we know that we day to day we are directly or indirectly talking with the web application. So digital infrastructure provides online facilities that are accessed by individuals to perform day-to-day activities. So the examples of modern web applications are social networking site, Facebook we are doing and all those things. So it is basically web applications. We are doing online shoppings. So this is web application. Internet banking day to day we are doing. It is example of modern web application. E-commerce websites,
and informational websites. These are basically example of modern web applications. So as we have seen that in our day-to-day life, we are encountering with the modern web applications. So several international organizations they have, and web applications is vulnerable because it is on internet and everybody is accessing it. So it becomes vulnerable. Various kind of the hackers are there. They trying to introduce. They trying to theft the data, theft the other informations as well. So international organizations they have surveyed, and as per semantic, the international and the semantics internet security they found that hundreds and thousands of new threats released every day. They surveyed that in a week, 31 million attempts to scan for web server vulnerabilities. Normally, if you talk about deployment architecture, so there is operating system, and then on the top of operating system, web servers are there, and then on the web server, web applications are deployed, and web applications are talking with database management system. And nowadays, for development of the web applications and websites, the concept of content management systems are there, which helps to develop the web application securely. So in a week, 31 million attempts were there to scan for the web server vulnerabilities, 18.1 million attempts to exploit Windows operating system vulnerabilities, and 1.9 million attempts to exploit web application vulnerabilities, and 1K attempts, 1000K attempts to scan the content management system vulnerabilities. Recently, the Qualys Threat Research Organization scanned 0.37 million web applications, and they found that more than 25 million vulnerabilities are there. Recently, in 2025, IBM surveyed, and they said that they reported that average cost of data breach was rupees 220 million in India. That is the average cost, which is very costly, and in course of the time, it is increasing day by day. If we talk about the Cisco statistics, so 94% enterprises use cloud computing for the development of web application. Nowadays, cloud is trend because for deployment of web applications, various CPUs are required. For example, if you want to put web application, so for the web server, one CPU is required. For the database management system, another CPU is required. So if we go for normal hardware, so a lot of the computers need to be purchased. That is why there is a concept of cloud where the virtual CPUs can be created, and for the one CPU, n number of the virtual CPU can be created. Therefore, nowadays we are maximum people are using the cloud computing. So 94% enterprises use cloud computing for the deployment of their application because it is economical and it is flexible. Cloud computing platforms are prone to the cyber attacks. As per the data breach investigation report, 56% violations are performed over the web application servers. The enterprise organizations have approximately 130 security breaches every year, and these results show that cyber crimes are getting costlier every day. So, due to growing focus and significance, researchers have applied artificial intelligence techniques to cyber attacks because it is nowadays in every field, artificial intelligence are used. So, in cybersecurity also they are used. Artificial intelligence significantly enhance the cybersecurity by enabling intelligent risk mitigation through automated threat detection and response. Because if we perform the manual detection, so it is almost impossible to detect every threat. But if we automate, then it becomes easy for us, and AI plays an important role. The AI-driven system analyzes the vast amount of the data in real time, and they identify patterns and anomalies that might indicate cyber cyber attacks.
The web application security faces challenges due to two reasons. Because lesser number of malicious requests compared to large number of willing requests. So these are certain aspects we discussed. And then we can say that what are the reasons that web applications are vulnerable. So literature survey reveals that most of the web applications do not employ robust security architecture. During design and development, it is very important to choose the security architecture, design pattern, etc. And if newer and inexperienced web developers, they are deployed on the development and design and development of the web applications. So they lack detecting and mitigating vulnerabilities. So good experience, good number of years of experience are required for the design and development of a application, which can be securely deployed. So we have seen that web applications are used by almost every one of us, and a lot of international organizations they have surveyed and found that hackers are trying to penetrate web applications, and therefore security aspect is extremely important. Before going further, let me talk briefly about web applications, concept of web applications. If we go a little bit history about the web applications, so they are when internet introduced. So three kinds of pages are there, like static pages, dynamic pages, and active pages. So in static pages, normally HTML hypertext markup language were used, where the static pages were already created, and when user requests, so this static pages are fetched from the file systems and it is sent to the requested client. Another is basically dynamic web pages, where queries requesting client. And the active pages normally concept of applets were introduced, where the applet run on the browser and they execute this. But in course of the time, people realized that for the dynamic web pages, every time data is sent to the server at the server web application server, and web application server fetches the data from the database management system, and then they generate the web page, and this web page transmitted, entire web page is transmitted from the server to the client, and they consume lot of bandwidth. Therefore, the people talk that instead of sending the entire page every time, let us send the information which changes. Therefore, they introduced the concept of JSON, and this led to the foundation of modern web application. The architecture of modern web applications is that the web application is based on three-tier architecture. One is basically client web server, and another one is basically web applications, and third component is basically database management system where data is stored. The web application is distributed in nature and consists of code on both server and client side. So here we can see that this is the web applications. It is part of it is on the web browser and some portion is on the web server. And this entire web application is deployed on the web server. And database, it will talk about web application will talk about the database management system. For the web browser side, JavaScript, Flash, etc. technology is used, and for the web application, the static HTML pages, Java, Servlet, and CGI is there. For the dynamic HTML page, JSP, PHP technologies are used, and they are running in the runtime environment like JVM, etc.
if we go a little bit deeper about the web application, so here we can see that in client side also it is layered, where the user interface are basically having the hypertext markup language and cross-site scripting and document object model. And for the event management, that is when you press any particular button, so event is generated. So for event handling, JavaScript are normally used, and they use the concept of event listener, document object model modification, etc. And messaging is done through the Ajax engine basically, because Ajax engine has got flexibility that only the changed portion is a small portion is sent to the server, and fetched data, that is only changed information, is retrieved and sent to the Ajax client. So entire page need not to be sent from the server to client. That is why the consumption of bandwidth is very less. So the XHR request basically is sent based on the user input to the server. Then based on this, at the server side, GSP, servlet, CGI, whatever the technology used, they receive the XHR request and they generate and send the XHR response, and this XHR response is received by the Ajax engine, and then the then the client side UI is basically modified. So this is briefly about the architecture of modern web applications. So after that, since web applications, I already mentioned that web applications are deployed on the internet and it is prone to security. So when any applications are developed, so there are two aspects basically. First is functional aspect, another is basically non-functional aspect. In the non-functional aspect, the security, the response time, availability, reliability, etc. is important. So security here is extremely important. And web application security standards, at international level, two standards were proposed. One is OWASP, another is Science. So I will be briefly talking about these standards. So Open Web Application Security Project, short form is basically OWASP. So it is open community dedicated to enabling organizations to develop, purchase, and maintain applications that can be trusted. WASP Application Security Verification Standard document provides a security checklist for key control needs verifications. They verify all pages and all resources for authentication except intended for the public. So normally the pages and resources that is used by the administrator, etc., those are basically authenticated. And for the public use, only that people who are just going to consume for reading purpose only, they are not authenticated. They verify all password fields that do not equal the password when it is entered. Normally, when you enter the password, star star is there. So whatever you write the password, it is not shown. It is very important because password is shown when they are echoed, so it becomes vulnerable and anybody can steal it out. So verify the sessions that are invalidated when user logs out. Sometimes what happens that when user logs out, the session remains, and this session, active sessions are basically exploited by the hackers, and they can enter into the system and they can steal the data. Therefore, it is extremely important to ensure that all sessions are invalidated when user logs out. In course of the time, WAPS issues the top 10 vulnerabilities. So WAPS top 10 application security risk document lists out the 10 most critical web application security risks. Mostly, I will talk detail about all vulnerabilities. So in summary, they are normally injection flaws such as SQL injection, operating system injection, and LDAP injections, cross-site scripting flaws, and cross-site request for flaws. And in addition to top 10 web application security, they also issues the top 10 mobile risk security, mobile risk, etc. And for that, they have created the document. Another international standard is basically SANS, System Admin Audit Network Security. So SANS Institute was established as a research
and educational organization to help the entire information security community. Since they issues top 25 most dangerous software errors, it is a list that identifies the most relevant software errors that can result in exploits and vulnerabilities. For example, control points checks that buffer copy without checking size of the input. This is classical buffer overflow. Resilience on untested info. Improper limitations of path name to restrict the directory, that is path reversal. So this kind of the few of errors what they generate. I just mentioned it out. So as I said that in course of the time periodically uh, OAPs they issue the top 10 security risks. So recent risk as per recent publications, these are the risks that is broken access control, cryptographic failures, injections that is OS reliable SQL injections, insecure design, security misconfiguration, vulnerable and outdated components, identification and authorization failures, software and data integrity failures, security logging and monitoring failures, server-side requests for the I will be talking briefly about each security risk and what are the defense mechanisms. First is basically broken access control. It is failure of access control that allows users to act beyond intended privileges. Say, for example, if I provide any particular user to read only write and he start modifying the data. So this is example of broken access control. So we ensure that this kind of thing should not happen. It leads to unauthorized data modification and disclosure. So what are the defense mechanism for that? The first defense mechanism is that apply the least privilege policies. That is, if any particular user wants to read only data, so just provide the read permissions. Do not provide the write and execute permissions. Enable limited login attempts to avoid brute force attacks. So you have seen that let us say sometime one user logs in and he forgets the password because of certain, or he uh, inserted the wrong password without because of some reasons. So after a certain attempts, for example, three number of attempts of wrong credentials, system will lock. So we enable, and we see that in banking system, if you do online banking and you provide the incorrect password or login, and after three attempts, your account is locked for a day. So this is one defense mechanism. Another is enable web session duration for each logged in user. One session is established, so you decide certain number of minutes or hours, and after that you automatically force the user to log out and then again log in. Another defense mechanism is we need to enforce the multi-factor authentication. Nowadays, we have seen that in addition to the login and password, OTP is there, OTP on the mobile and OTP on your email is there. So this is an example of multi-factor authentication. So we must ensure to tackle the broken access control vulnerabilities. Utilize cloud-based access control if possible. If your cloud service provider provides access control, role-based access control, then you utilize that also. Audit access logs for security issues with automated tools. Whatever the logs, you keep on collecting the logs. Logs are whatever the activities performed by each and every user, and you keep on audit the log. And manual auditing is extremely important and difficult. Therefore, it is advised that automated tools is a good choice. And then avoid storing the API keys in version control. Possibility of unintentional leaks. Sometimes people keep on storing the API keys in version control systems, but if anybody will penetrate
your version control system, then all API keys would be compromised. Second vulnerability is basically cryptographic failures. This cryptographic failure vulnerability occurs because of use of weak or old cryptographic algorithms or default encryption keys. So therefore, it is important that your good keys and strong keys should be used, and latest cryptographic algorithms should be used. The defense mechanism of cryptographic failures are that we need to categorize the data based on sensitivity and criticality. It helps to specify access and protection control. For example, you need to categorize data, that what are the public data, what is the restricted data, what is the sensitive data, another categories of the data. So based on that, you need to categorize the data, and for every category of the data, you need to specify different level of access and protection control. You need to set up the encryption data at the rest to reduce unauthorized access risk. Normally, the encryption is done for data in transit. When data is when you log into the data, then or you provide some input to the data, then this data is encrypted and then transmitted to the receiving side, and the receiving side will decrypt the data and then perform the action, and then before sending the data again, it will encrypt and send the data, and then the receiver side will decrypt the data. That is data in transmission. But data at encryption data at rest is also important, because when the data is stored into the hard disk, so they are in unencrypted format, and if anybody will steal the hard disk, then they come to know the entire data. Therefore, before storing the data into the hard disk, the data should be encrypted and stored, because if anybody will steal hard disk and they put into the systems, they could not make it out anything. You need to set up the encryption data in transit to ensure data integrity and confidentiality during transmissions. Now enable the data tokenizer to replace the actual sensitive data with non-sensitive data. So you need to tokenize that, which one is sensitive data, which one is insensitive data. Disable caching for sensitive data to avoid data exposure, because normally when we access the data, so caches are there and a lot of the data are cached, so that in order to make the usability fast. But if it is sensitive data, so it is important to do not cache. Therefore, disabling caching requires. Another vulnerability is basically injection vulnerability. So three kinds of the injection threats are there. That is SQL injection, operating system is injection, and LDAP injections. And these three injections occurs when interpreter receives the untrusted data as a part of command and query. So and this injection flaw occurs when dynamic queries are used or user data are not validated, and it fetches all the information from the database. So it is very dangerous, and all sensitive data is hacker can steal. So defense mechanism there, that we need to invalidate. We need to validate all input data in respect of the required properties. For example, we need to decode the data before performing the validation. Check the length of criteria. For example, if let us say mobile number is there, so 10 digit is allowed, only numeric is allowed, and non-numeric is not allowed. So this kind of length criteria and acceptable data type is required to be taken care of, and you need to also identify that what kind of data are unacceptable data type. For example, in order to prevent the SQL injection, you need to unaccept the script, etc. Because through the script, SQL queries are inserted in the data, and they will fetch the data. For the validation of the input data, if required, you can use the regular expressions to filter input string that allows required characters, and set up the
Hello. अभी मैं मीटिंग to set up the policies of web application firewall to inspect the web request. Because web application firewall is basically at the layer 3, but that is internet layer, but web application firewall is employed at the layer 7, that is the application layer. And this web application firewall nowadays has capability to protect SQL injections, etc. So we need to set up, and for the uh, uh, blocking the SQL injection and other kind of the top 10 vulnerabilities, we need to set up the appropriate level of the policies. Another important uh, vulnerability is basically insecure design. So insecure design vulnerability occurs because of the architecture of and design flaws during the software development of life cycle and generating error message with sensitive data. Sometimes, for the exceptional errors, exceptional situations or some kind of error, you need to ensure that uh, it should not publish some message which can be exploited by the hackers. And this message helps hackers to introduce system. So for insecure design, defense mechanism is that we need to validate all inputs. So every type of the input using regular expressions or some kind of a mechanism we need to validate, and only valid inputs are allowed to insert it into the system. Sanitize all outputs to ensure not reveal too much information. As I said that, for error messages. For example, take the example of, internet banking. So if you, let us say, provide the wrong password or wrong login, so never message says that your password is wrong or your login is wrong. So always said that something is wrong. So they are precisely spell it out that what is wrong. Because if it spell it out that password is wrong, then hacker will come to know that login is okay and password is. Then he will use the brute force mechanism or some other mechanism to introduce to uh, concentrate for hacking the password only. Another defense mechanism is reduce the surface attack area. Basically, surface attack area is that number of input for that particular web applications. So during requirement elicitation phase, we need to ensure that in order to provide particular functionalities, we need to ensure that only required number of inputs are provided. Do not provide more input because more input fields are there. So surface area will be increased and hackers will get the opportunities to attack the system. So the concept of reduced surface area is very important and we must keep in mind while design and development of the web application. Use the concept of defense in depth. Defense in depth means that there are various security controls. So in place of using the one security control, you try to use a layered security control. For example, let us say web applications and there and it is using the database management system. So for the user and the web application, authentication and authorization should be there. And when your web application is going to talk with database management system, then web application should be also authorized by the database management system. That is, web application should provide the requisite login and control mechanism for authentication purpose. And when it is authenticated, then only DBMS should allow to request the query and produce the data. We need to ensure that the output do not reveal unnecessary information that can be exploited for the text. As I mentioned that uh, uh, if you example of the uh, banking system, that if you provide the wrong password or wrong login, then never tells that what is wrong specifically, rather it tells that something wrong. So and design security mechanism such that failure disallow operation. Normally, when we design, so there are three kinds of the operations. One is that
operation is successful. So once operation is successful, then it allows to proceed further. And when operation is unsuccessful, so don't allow, rather disallow it. And third one is basically exceptional situations. So in exceptional situations, sometimes we allow the operations and sometimes we disallow the operations depending on situation. But for the security aspect, always it is advisable that in case of the exceptional situation, always disallow the operation, never allow the operation, though it may be allowable. Then we need to apply the unit testing to validate that each component was correctly independent of each other. And after testing each component correctly, we need to apply integration. We need to integrate all component and apply integration testing to validate that the overall system act properly or not. So we talked about various security mechanisms. Next, vulnerability is security misconfigurations. These security misconfigurations occur because of improper configuration of security control in the system. Normally, we apply the default setting. When we uh, load the system, so it is always recommended that we need to change the default setting, we need to change the default password, etc. And we need to enable unused account, unnecessary reports and privileges, etc. So, for example, when you deploy the web applications, so nowadays HTTPS only is used, HTTP is not used. So better to disable all ports except 443 port because HTTPS uses 443 port. So this is called basically hardening. Similarly, web application when you are using, so web application has got different kind of the modules. So you need to ensure that only the modules which are required to run that particular web application are enabled and the rest of the module should be disabled. So privileges, ports, and unnecessary account should be disabled because security misconfigurations, vulnerability occurs because of enabling these unused accounts, unnecessary ports. Yes. What is the defense mechanism? Is that you need to change the default password and username. Nowadays, you know that when first time your login is created and when you logged in, so it is always recommended and system normally forces to change your password. Enable real-time notification to alert if resources are improperly secured. Because somebody, some if you do something, so some operations or some transaction, so your message, mobile message comes in. So it is notification that some transaction is done. If genuine transaction, then it is okay. If somebody has hacked it and they are performing the transaction, then notification comes to you and you take appropriate course of action. Disable the unused services and packages, as I mentioned. Then when you deploy the application or load particular database management system, web application server operating system. So you need to identify that what are the services required to run that particular application. Only that services should be enabled, and the remaining services which are unused must be disabled. Uh, the packages which are essential to run the application should be enabled and rest is disabled. And normally this is called hardening of particular component. For OS level, for the web application level, for the firewall level, for the router level, or at all level, this kind of the hardening is required. You need to delete unused accounts also. Audit access blocks for security issues with automated tools because all necessary transactions must be logged. So you need to enable the log, and log are basically created, and with automated tools, access audit of that particular access log is necessary to prevent the security misconfiguration vulnerabilities, eliminate unnecessary dependencies, component files, and documentation, etc. Another
component is basically vulnerable and automate and outdated components. The use of components with known vulnerabilities, outdated, unused component pertaining to operating systems, libraries, and packages lead to this vulnerabilities. So defense mechanism is that we need to monitor for outdated libraries included in the web application using a web security scanner. Therefore, the web application that is developed today, they might have used particular library, but in course of the time, library has got vulnerabilities and patches of that particular library has released. Therefore, it is advised that in course of the time we keep on patching our libraries if required to replace that particular library. So we need to replace in course of the time to make the web application secure. We need to take the appropriate actions for unmaintained libraries and components that do not produce security patches for the older version. Sometimes, we have used the particular library and, support of that particular library support has stopped. Then it is better to replace that library. Otherwise, it has got certain security risk, and this security risk is not plugged. Then your web application becomes vulnerable and it may be exploited by hackers. So we need to select the cloud offering whose critical components have been accessed as per National Information Assurance Standard. So it is standard at international level, and cloud offering they comply that particular standard, and therefore it is secure. Next is vulnerable is identification and authentication failures. So improper implementation of users authentication and session management leads to this vulnerabilities. If we permit the weak password using weak password hacking and use of ineffective forward password process, then this vulnerabilities occurs. So the defense mechanism is that we need to enable multi-factor authentication. I already mentioned multi-factor authentication means in addition to the login password, OTP and mobile and mail and other mechanisms are there. We need to ensure that no default credentials are deployed, especially for admin users. Always try to change or try to remove the default credentials. Only the valid roles and their authentication and authorization mechanism should be in place. We need to comply the National Institute for Standard and Technology guidelines regarding password length, complexity, and rotations. So you know that password has got that at least 8 to 15 length password should be there. One capital letter and at least one special character, one numeric. So these are the basically password policies, and it is required. It is advisable to have the relatively complex password so that a hacker could not easily guess and they could not put it into the system. And in course of the time, after certain months or days, the system forces user to change the password so that it becomes it should fulfill the purposes and should not compromise. If anybody has compromised, then in course of the time you have changed the password, he could not make it penetrate with the system. We need to ensure that failed logging attempts are limited. So as I already mentioned, that after 3 number of the failure, the account is logged for the day. As I take an example of the internet banking. So in every system, this kind of the provision should be maintained. We need to use a specific tool like CAPTCHA to filter out the automated forms from accessing the systems. So we have seen that almost every system uses the CAPTCHA. We need to make sure to create the new random access session for high entropy and logging using the built-in to secure the server side manager. Next is basically software and data integrity failure vulnerabilities. This software and data integrity failure vulnerability occurs because to infrastructure and do not protect the software from integrity violations. It occurs when application relies on the libraries and plugins
from untrusted sources, repositories, and content delivery networks. So nowadays, web applications mostly they are using libraries, plugins from the various sources. Before using, we need to ensure that they are from the trusted sources. Do not use untrusted sources. So defense mechanism for this software and data integrity failure vulnerability is that we need to make sure that software or data is from expected source. So first you need to ensure. Then make sure the software pipeline has a review process for the code and configuration changes because whatever the software library you have used, if they are not properly and in course of the time they are not audited and security vulnerabilities are identified and they are basically plugged in and patches are released. So your system becomes vulnerable. So that you need to make sure that the software pipeline has a review process for the code and configuration changes. If they are having the review process, so certainly they will found the vulnerabilities and they will release the patches, and you need to plug the patches in your application. You need to serialize the data. The serialized data should not be sent to untrusted clients without a means to detect tampering or reply through some form of the integrity checks or digital signatures. Normally, serialized data is the data that do not change in the course of the time. So for that, we need to ensure. Next vulnerability is security logging and monitoring failures. The insufficient level of logging and monitoring of active security incident lead to these vulnerabilities, and it is very difficult to detect suspicious activities due to inadequate implementation of log formats and lack of backup. So logging is extremely important, and detailed level of logging is important, and log backups of the log should be there because if backup is not taken and your device fails, then your log is also lost. Therefore, the backup of the log is also important. The different security mechanism that is required to tackle this vulnerability is that we need to ensure that all logins, access control and server-side input validation failures are logged with proper context, because we need to understand when some failure occurs and we need to go to the logs. So context is very important. That for particular context, what kind of log is taken. Therefore, this log helps for the recovery purpose. We need to ensure that the log data is encrypted to prevent injections or attacks on logging systems. Sometimes people, hackers, they attack on the logs and then try to steal the log. So log protection is extremely important. We need to, integrity control must be in place on high value transactions. We need to ensure that in transactions has occurred, so the user is basically authorized and integrity must be maintained. We need to adopt appropriate incident response and recovery process. Next is basically server-side request forgery vulnerabilities. The result of misuse of server's functionality to access or modify internal data, and attacker uses server code to gain access to private server setting. So server-side request forgery introduces the hackers they go into the system bypassing the access control mechanism, and they access the sensitive data. The defense mechanism is that we need to segment the server for other resources. Servers should be protected, are kept into more secure environment than other resources. We need to filter or block server-side request forgery by attacking LFI or RFI, local file injection or remote file injection. Block all but essential internet traffic using DNI by default firewall policy or network access control rules. So we need to only allow who are authorized, and any public, who want to access the system by default, we need to deny. We need to ensure that all input data is sanitized and validated output before input is sent. We need to stop redirecting HTTP requests rather than HTTPS request is required,
and you need to block the port 8080 because HTTP request not serviced. We need to maintain consistent URL so that time of check and time of use this permission can be widely. So we have talked about top 10 vulnerabilities and their defense mechanism. In order to, in order to stop this kind of the vulnerability and handle this kind of the vulnerability, secure software development life cycle is important. We have seen that essential that security is embedded in all stages of software development life cycle. Normally, the life cycle is requirement, illustration, design, development, testing, and deployment. So, in the requirement illustrations, normally we collect the functional requirement, and in addition to the functional requirement, non-functional requirements are also handled. In the non-functional requirement, normally the reliability concept, the availability concept, and most important is the security aspect. So for the requirement definitions, the security requirements review is performed, and when all security what I mentioned is addressed, then we go for the design, and in also design secure design review is there, so that whatever the design patterns we are using, whether every component is secure or not, so all security standards are fulfilled or not, and after ensuring that requirement illustration and design phase, all security aspects were taken into the account, then development is there, and development testing is performed, and security code review is performed, and after testing several cycles of the testing, it is not sure that your application is secure from all vulnerabilities. Then after deployment, penetration testing is performed, and penetration testing is normally done with automated tools. And if some kind of the vulnerabilities are found in penetration testing, then they again go through this cycle, and if design changes requirement, some requirements side something need to be added in the security aspect, then development. So this cycle, falls. In the software development life cycle, the security requirements are basically identifying the key security risk in the application, identify the standard, the risk password, and security schemes, legal and regulatory security requirement, ensure that the project is accessible from information security perspective. In secure design, we need to perform the threat modeling by decomposing application, categorizing and flagging threats, and finalizing mitigation threats. Design the countermeasures to mitigate identified threats and add the security requirements. Plan the security testing phase. Output the security technical specification and security plan. After deployment, for deployment, you need to ensure that the code is developed securely and identified security control design phase is implemented. Perform the unit testing for security threats, for security features of the application. Perform the security audit and code review. Secure coding standard, whether it is followed or not. Automated code review is performed or not. Then independent code review is done. Then we need to perform the testing. In the testing, we need to ensure that security design has been implemented correctly in the application components. We need to execute the test code during the design phase. Independent penetration testing include the infrastructure assessment is done or not. And then, as I mentioned, that we need to perform the penetration testing after the normal testing at the deployment phase. In the penetration testing, the web applications are usually deployed with security faults leading to the attack. And then penetration testing helps to locate the vulnerabilities and mitigate the faults. Tools are normally for the penetration testing. We are using the Nmap, Netcat, OpenBag, Nextflow, Metasploit, and Dropsuite. The tools do not provide sufficient data coverage. Normally, we use the tools, but normally it is found that they do not provide the sufficient data coverage. So, effectiveness of the tool are not satisfactory. Therefore,
performance of tool depends on the application scenario and class of the vulnerabilities intended to detect. Therefore, the manual penetration testing needs a team consistency of the security experts and domain experts, but they are time consuming and costly and apply to critical applications. Then this is a typical deployment scenario that, as I mentioned, that your web application web server should be deployed at several at segmented server level, and normally there is a concept of demilitarized zone, and in the servers, demilitarized zone is protected with the firewalls and intrusion detection system, intrusion prevention system, web application firewalls, etc. And other than this, the embedded firewall is there, and with the switch LAN is there, and for the router, it is connected with the World Wide Web, that is the internet, and anybody you can access the particular service through the internet. So we have discussed that there is a concept of the LAN. Then demilitarized zone. Demilitarized zone is physical or logical subnet that separates a LAN from other untrusted networks, also known as perimeter network, and perimeter networks are screened subnetworks. Firewall. Then intrusion detection system and intrusion prevention system is the idea is to detect many kinds of attack behavior that can compromise the security of the system. IDS can detect the worms, viruses, unauthorized logins, access to the sensitive files and folders, and increase access privileges. Intrusion prevention system detection system only detects, but they not prevent, they not do any actions. So intrusion prevention system monitors the network to study the behavior of the unauthorized user in the network. Therefore, IPS will prevent unauthorized users to access the network and the web applications. Important component is basically web application firewall, where it is basically layer 7 defense mechanism that is it works on the application layer, and it protects the web application by filtering and monitoring HTTP traffic between web applications and the internet. It usually protects the web application from the attacks such as cross-site. That is basically top 10 vulnerabilities taken care by the web applications. Now people have used the machine learning and AI in security aspect, and particularly in the WAF, they have introduced the concept of ML. So we have seen that in present era, the computing devices, for example, WAF, firewalls, etc., even routers make use of the machine learning technique. And ML approach suffers from the more false positive alarms, because we have seen that for the sensitivity and accuracy, there is the concept of false positive, false negative, true positive, negative, etc. And using this matrices, F1 is score, etc. And accuracy is calculated. So using machine learning, the accuracy is a little bit lesser. Therefore, researchers have applied the concept of deep learning in security domain, and then computing devices make easier training with deep learning, and they achieve less false positive alarm than machine learning. That is, the accuracy of deep learning is more than the machine learning techniques if they are employed as security components like WAF and WAF, etc. Deep learning methods require large volume of data to train the model. That is one of the limitations of deep learning, because the data is and labeled data is not in good amount, then certainly security cannot be protected. Researchers have used labeled data for unsupervised learning algorithms to obtain high class accuracy, but data is mostly not labeled in practice. That is one of the limitations. Web application firewall, as I mentioned, aid in protection of the web application by filtering and keeping track of HTTP traffic between web application and internet. Web analyzes all incoming traffic, detect and block X. Traditionally, web application firewall have relied on a static rule-based approach to detect and mitigate attacks. These rule sets often struggle to keep pace with the rapidly evolving landscape of cyber threats.
because today we have made this static rule, and every day new threats are coming. So we need to change the static rule continuously. Otherwise, it becomes obsolete, and it could be penetrated by the attackers. So as a result, web applications firewalls have many have generate false positive and incorrectly flagging legitimate traffic as malicious or genuine threats altogether. So machine learning algorithm enhances the web application firewall's ability to detect and respond to threats by analyzing vast amount of the data and identifying patterns and making real-time decisions. The web application firewalls are signature are rule based. So improperly configured web application firewalls may not block malicious user input. Writing comprehensive rules are extremely difficult. Then creating new rules for new attack is continuous process. Automated scanning tools like Wireshark and Mapnesis are normally used. It protects networking resources and web application from known attacks, but certainly zero-time attack is unable to protect that, unable to protect from novel kind of attack. So we have mentioned various vulnerabilities. So as a concluding remark, the security web application is a challenging task. Web application security threats along with prevention techniques. So we need to perform the secure coding, not only secure coding, but secure software development life cycle must be performed. In addition to testing at the deployment level, we need to perform the penetration testing, and we need to deploy the web application in demilitarized zones, etc. Vulnerabilities can be mitigated by adopting best practices. For example, input validation and output sanitization is must. Adaptation of content security policy during coding phase is also very much important. Vulnerability detection tool with their performance must be employed. So these are basically references that I have taken for my talk. Thank you. Thank you, Dr. Ansari. Really, it was a very nice and insightful talk. Thank you, sir. Dr. Ansari told how the importance over the level data in respect to machine learning and deep learning others, intrusion detection systems, intrusion prevention systems, and how to integrate the data with the software in respect of the security, because security is a very challenging task. And in the era in which we are living, it is very important to secure the data. Thank you, Dr. Ansari. Now I invite Ms. Neetu for the formal vote of thanks. If there is any question, then you can please ask. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरी क्वेरी ये है जी कि जैसे इंस्टीट्यूशंस में हम सेलेक्ट करते हैं जी कि सेलेक्ट पीपल कि यू हैव टू डू दिस बेटर टास्क दिस जो उसकी थ्रेट है राइट सर कि ऑफिशियली टैलेंट को हम सेलेक्ट करें कि राइट सर गोल टास्क इज टू ब्रेक द सिक्योरिटी और वो मुझे फीडबैक करे कि जो आपने ये बनाया है देखिए उसको हमने ऐसे ब्रेक कर लिया। राइट सर हम दोनों पैरेलल मिल करके काम करें, एथिकल हैकर एंड द डेवलपर। राइट सर वो नॉन एथिकल हैकर है उसके लिए और चैलेंज बढ़ जाएगा। तो आई थिंक हमारी सिक्योरिटी और जो है बेटर स्टेज में होगी। Sir, as I mentioned, penetration testing. So penetration testing का purpose ही यही है कि non-ethical hackers, basically, a lot of tools are there, so they penetrate into the system. So they act as a non-ethical hacker, and they provide the input that these are the vulnerabilities remains into your system. So based on their feedback, we again plug the feedback, we go for the design development. So penetration testing is basically meant for that purpose. That purpose. Yes, sir.
Yes. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Any other question? Any other participants wants to ask question? On behalf of Department of Mathematics, Chaudhry Charan Singh University, and the organizing team of this international workshop, it's my privilege to extend a heartfelt vote of thanks to Honorable Dr. Yusuf Ansari, DRDO Delhi, for delivering an insightful and highly impactful talk on web application security threats and defense mechanisms. Sir, your lecture have given us comprehensive understanding of the rapidly evolving threats landscape in web application security. You clearly explain how attackers like SQL injection, cross-site scripting, cross-site request forgery, broken authentication, and insecure direct object references continue to challenge modern systems. Your emphasis on strong input validation, secure coding practice, robust authentication, and authorization, and the development of intelligent web applications firewalls has greatly enriched our awareness of practical defense strategies. The way you highlighted the importance of continuous security testing and proactive vulnerability assessment provide a perfect forward-looking conclusion, reminding us that security is not a one-time implementation, but it is a adaptive process. Once again, thank you, Dr. Ansari, for sharing your Thank you. expertise and guiding us toward a more secure digital future. Thank you so much. Sir. Thank you, Dr. Ansari. Thank And you. we will be very happy, and in future we will also take your help for Yes, sir. Yes, sir. It is my privilege. for the enhancement of our knowledge and other thing. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Now I invite all respected professors and all the participants for lunch. After break for lunch, we will gather again at 1:30 p.m. Now there will be lunch will start 12:30 to 1:30. At 1:30 we will assemble here for the validity session. In the validity session there will be two important lectures will be one computational intelligence and other will be the artificial intelligence and its perspective in Indian knowledge system, because we all Indian have to know what was the perspective of artificial intelligence and how was artificial intelligence in initial days that. So we will assemble here at 1:30. Thank you.
या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् As we reflect on the sessions we have attended, the discussions we have engaged in, and the insights we are taking home, I am reminded of the words of T.S. Eliot: every moment is a fresh beginning. Indeed, while this workshop concludes, what it begins is a renewed commitment to innovation, learning, and growth in our academic practices. We extend a warm welcome to our dignitaries, resource persons, faculty members, and participants for joining us in this culminating moment. May the spirit of curiosity and collaboration continue long after this session. To honor the presence of our esteemed dignitaries, we shall now move to the felicitation ceremony. This gesture is a token of respect and gratitude for their continued guidance and support. As a symbol of growth, sustainability, and our enduring academic bonds, we will now present sapling, shawl, shriefal, and memento to our distinguished guests. I invite our head of the department, Professor Mukesh Kumar Sharma sir, to kindly present sapling, shawl, shriefal, and memento to our eminent distinguished guest, Professor Pawan Kumar Sharma. He is a professor of political science in our university and currently registrar of Sri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University, New Delhi. Please give a big round of applause and welcome him. Thank you very much, sir, for gracing this occasion with your presence. Now I invite Professor Sivraj Singh, sir, to kindly present sapling, shawl, shriefal, and memento to our eminent keynote speaker, Professor J.C. Bansal, South Asian University, New Delhi. Please give a big round of applause and welcome him. Thank you very much, sir, for gracing this occasion with your presence.
Now I invite Professor Jamala Madam to kindly present sapling, shawl, shriffle and memento to our respected ex-pro Vice Chancellor, Senior Professor M.K. Gupta sir. Thank you very much, sir, for gracing the occasion with your presence. Now I invite Dr. Sandeep to kindly present sapling and shawl to our respected Dean Faculty of Science and co-patron of this workshop, Professor Jamala ma'am. Thank you very much, ma'am, for gracing this occasion with your presence. Now I invite our HOD and the chairman of this workshop to kindly present sapling and shawl to organizing committee member of this workshop, Professor Shivdas Singh sir. Now I invite Dr. H.N. Singh to kindly present sapling and shawl to the convener of this workshop, Dr. Sandeep Kumar. I also invite Professor Mridul sir, Professor Pawan sir to felicitate Dr. Sarkumari, co-convener of this workshop. To inspire us and to invite the Dean Faculty of Science, Professor Jamala Madam, to deliver the welcome address. ठीक है. Sir, please come and address the gathering with your kind words. थैंक यू डॉक्टर सुरू. सबको नमस्कार. 5 दिवसीय इस वर्कशॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रंटियर्स इनोवेशन इन फजी ऑप्टिमाइजेशन साइबर सिक्योरिटी एंड सिमुलेशन, इसके समापन समारोह में आप सबका मैं डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ. बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा है इन सारे दिनों में. आप लोगों ने ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत कुछ सीखा होगा, और ये इस वर्कशॉप का पर्पस भी था कि आपको एक्सपर्ट्स को सुनने का मौका मिले और उनसे कोलैबोरेशंस, उनके साथ कुछ ज्वाइंट वर्क करने का. तो बहुत सारा विजन फ्यूचर रिसर्चर्स के लिए इसमें लर्निंग रही है, इसका हमें पूरा विश्वास है. तो मैं इसमें आज के इस समारोह में हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा जी का चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय गणित विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ. सर हमारे यहीं पे पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे और भारतीय ज्ञान परंपरा पे
अभी भी हमारी हैं। अभी यहीं पे है, उन्हें रिटायर यहीं से हम मतलब इसी विश्वविद्यालय से करेंगे। मतलब ऑफिशियल रिटायरमेंट, जो कि डेपुटेशन चलते रहेंगे। और हमारे लिए सम्मान है कि वो इस समय लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के पद पर हैं। इससे पहले जामिया मिलिया में भी परीक्षा नियंत्रक के दायित्व पे रह चुके हैं। अभी बहुत सारे दायित्व आने वाले हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा पर प्रमाणिक अध्ययन है सर का, और भारतीय दर्शन पे बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। और उन्हें हम विभाग में पहले भी सुन चुके हैं। उन्हें सुनना एक बहुत अच्छा अनुभव होता है, धारा प्रवाह उनका। और आज के विषय पे विशेष तौर से वो क्या बोलेंगे, उसके लिए हम सबकी बहुत उत्सुकता है जानने की। प्रोफेसर M.K. गुप्ता सर, मृदुल गुप्ता सर हमारे टीचर भी रहे हैं डिपार्टमेंट में, सबसे वरिष्ठ हैं, सीनियर प्रोफेसर। और जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर, 1991 से डिपार्टमेंट में है। ठीक है ना सर? 1991 से, तो एक लंबा समय। बहुत सारे बच्चे तो तब उस समय जो स्टूडेंट्स हैं वो हुए भी नहीं होंगे, तब से विभाग में सेवारत हैं। एक लंबा समय देखा है विभाग में, विभाग का प्रोग्रेशन देखा है, और विभाग की हर चीज में आपका रोल है। तो मैं पूरे विभाग, हम सब साथियों की तरफ से सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर देसी बंसल साउथ एशियन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से हैं। विभाग की तरफ से और विश्वविद्यालय की तरफ से सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी अजय कुमार जी, अच्छा, हाँ, अभी जो लोग आने वाले हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर अजय कुमार जी, एडिशनल डायरेक्टर DRDO, अभी आने वाले विभाग में, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही डॉक्टर KP सिंह, हमारी ये वर्कशॉप DRDO के साथ ज्वाइंटली कोलैबोरेशन में था। DRDO पहले भी हमें सपोर्ट करता है डिपार्टमेंट को, और इस इवेंट में भी सपोर्ट किया है। डॉक्टर KP सिंह इसी बैरल के रहने वाले हैं, तो उनका भावनात्मक लगाव भी यहाँ के लिए रहता है। तो मैं विभाग में उनकी अनुपस्थिति में उनका स्वागत करता हूँ। प्रोफेसर जयमाला मैम विभाग की है, लेकिन डीन साइंस भी हैं। तो विभाग की तरफ से मैम का भी बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। आप देख सकते हैं, आप लोगों ने बहुत स्वादिष्ट भोजन इस बीच में किया है। तो मैडम का एक एक चीज में ध्यान था, कितना धनिया डला है, क्या चीज है। आज आपने दिन में कद्दू का रायता खाया, कई लोगों को पता नहीं होगा ये क्या चीज है, पर वो उनका स्पेशलाइजेशन था। तो हर चीज पे बहुत बारीकी से ध्यान रखे हुए थे। तो मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर M.K. शर्मा जी, मुकेश कुमार शर्मा जी बहुत डायनेमिक हैं, और उनकी हेडशिप में विभाग नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम बहुत सरलता सुगमता से कराते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी मैंने पहले भी कहा था बहुत अच्छी है, और वो डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। आपका भी स्वागत करता हूँ। डॉक्टर सरू कुमारी हमारे विभाग से एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जल्दी प्रोफेसर होने वाली हैं। मेरी शुभकामनाएं, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और पूरे कार्यक्रम को बहुत अच्छे से संभालते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट डॉक्टर संदीप कुमार, जो बैकबोन है, हर चीज के पीछे उनका रोल रहता है। स्पीकर, सीधे कंटेंट, शायद वो अकेले हैं जिन्होंने इस वर्कशॉप के एक एक शब्द को सुना होगा, और उनसे पूछ भी सकते हैं उसने क्या कहा था। तो ऐसी स्ट्रेंथ के साथ आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसके साथ हमें सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर तेजवीर सिंह जी हमेशा हमारे साथ होते हैं। प्रोफेसर HN सिंह जी, प्रोफेसर अनुज कुमार, और अन्य विभागों से कामेश जी, अमित तिवारी जी बहुत अच्छा हमें सपोर्ट करते हैं। सारे लोगों का मैं स्वागत करता हूँ यहाँ पे। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप सबके बगैर ये पॉसिबल नहीं था। जितने वॉलंटियर्स हैं, जितने रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उन लोगों ने दिन रात काम किया है। हम लोगों ने देखा है, चाहे रंगोली, चाहे और सब व्यवस्थाओं में। तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। धन्यवाद। Much, sir, for your warm welcome address. Now it's my deep pleasure to invite the Dean Faculty of Science, Professor Jamala Madam, to address the gathering with his wisdom. Thank you, madam. Jnanam paramam dhyayam.
किसी भी वर्कशॉप, किसी भी कॉन्फ्रेंस, कोई भी मुलाकात, कोई भी कक्षा या हमारा समाज, वो सब मिलकर के हमेशा हमें ज्ञान ही देने का प्रयास करता है। और हमारा परम कर्तव्य है, ज्ञानम परमम ध्येयम, हमारा परम कर्तव्य है, ध्येय है कि हम ज्ञान की प्राप्ति करें। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस समाज को, किस इंस्टीट्यूशन को, किस व्यक्ति को सुनना चाहते हैं, अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं कि आप उससे उस ज्ञान की प्राप्ति करें। ये जो वर्कशॉप हुई, बहुत बार होता है, हमारे साथ भी होता था जब हम स्टूडेंट थे, इवन जब हम टीचर्स हैं, कि जो स्पीकर्स होते हैं वो जरूरी नहीं होता कि आपको उनका कहा हुआ सब समझ आए या उनके कहने का स्टाइल आपको समझ आए। कई बार कंटेंट उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होता है कि आप भाव विभोर हो जाते हैं, उससे कनेक्ट कर पाते हैं और उसको सुनते हैं। लेकिन कई बार कंटेंट बहुत अच्छा होता है, बाई चांस डिलीवरी उस तरह नहीं होती कि आप उससे जोड़ पाए। तो ये एक तरह की डाइवर्सिटी है जो आपको किसी भी वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंस में मिलती है। यदि आप ये सोच करके बैठें कि इस व्यक्ति का समझ आया या नहीं आया, पर ये इतनी ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचा कि आज हम सब उसको सुन रहे हैं। समझ आना ना समझ आना इज अ डिफरेंट मैटर, है ना। सारे प्रधानमंत्री सबको समझ नहीं आते, पर वो प्रधानमंत्री की पद पे पहुंचे ना। सुबह सर एक बात समझा रहे थे सिंह सर, गुरु। तो आप गुरु के सानिध्य से गुरुता को प्राप्त करें। गुरुता मतलब श्रेष्ठता। गुरु का मतलब कोई एक फिजिकल बॉडी होती है ऐसा नहीं है। गुरु कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा वर्कशॉप या फिर कोई कॉन्फ्रेंस या कोई व्यक्ति या कोई समाज, वो आपका गुरु हो सकता है जिससे आप सीख रहे हैं। ये आपका चॉइस है कि उसको चुन रहे हैं जो कुछ अच्छा सिखा रहा है या उसको चुन रहे हैं जो आपको एक गलत दिशा दे रहा है। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बेसिकली उनका जो कर्तव्य होता है, उनका जो कार्य होता है, वो यही होता है कि आपको एक सही दिशा दिखाएं। तो जो हमने रिसोर्स पर्संस बुलाए यहाँ पर, जो भी लेक्चर्स करवाए, उसमें कुछ आपके मतलब के थे, कुछ आपके मतलब के नहीं थे, कुछ समझ आए, कुछ नहीं समझ आए, लेकिन आपने बहुत सारे गुरुओं की सानिध्य को प्राप्त किया, जो टेक्सास से भी थे, जो इंडिया से भी थे, जो इंडिया के विभिन्न प्रांतों से थे, विभिन्न स्टेट से थे, बाहर के लोग भी थे। आप ये देखो कि उनका इंटेलेक्ट लेवल कहाँ था। वो इस लायक हुए कि हम उन्हें सुन रहे हैं, तो आपको भी इस लायक बनना है कि हम आपको सुने, आपको भगाए नहीं, ये ना कहें हम आपसे दूर भाग रहे हैं, हम आपको सुने। तो ये बेसिकली चीजें एक तरह से एनकरेजमेंट के लिए होती हैं। तो आपको इन्हीं गुरुओं के व्याख्यान तो सुनना ही पड़ेगा। हम में से कोई यहाँ खड़ा हो जाए, आपको लंबे लंबे व्याख्यान दे सकता है, उसमें से कुछ जरूर पकड़िए। बेशक एक लाइन ही हो जो आपको ऐसा लगे कि ये बहुत, आप आजकल यूज करते हैं ना कैची लाइन, कि कुछ एक जरूर पकड़िए और उसे जीवन में आत्मसात करिए। बिल्कुल मत डरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। एक शब्द जुड़ा हुआ है, आर्टिफिशियल। जो आर्टिफिशियल है वो आर्टिफिशियल है। आप ओरिजिनल हैं तो आप ओरिजिनल हैं। तो आप डरिए नहीं। आप किसी भी फील्ड में हो, वहां पर सिर्फ ये मनन करिए कि जो मैं कर रहा हूं, क्या कभी कोई आर्टिफिशियल बुद्धि आके उसको कर लेगी? अगर लगता है कि कर लेगी, तो तुम्हें बस उससे थोड़ा ऊपर जाना है, जो वो आर्टिफिशियल बुद्धि न कर पाए। या उस आर्टिफिशियल बुद्धि को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और रियलिस्टिक बनाने के लिए आप जो काम कर सकते हैं वो आप करिए। तो आपको केवल नब्ज पकड़नी है। आप अगर ढर्रे में चलते रहोगे, सोचोगे कि पढ़ाई कर ली, लेक्चररशिप हो जाए या कहीं जॉब मिल जाए, तो आप ढर्रे की जिंदगी कम से कम अगले 10 से 15 साल बाद नहीं जी पाएंगे। तब आपको लगेगा बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठे हैं और जॉब तो मिल नहीं रही। तो आपको अपने को अपडेटेड रखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हावी होना है। यानी आप उसे सिखाइए ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी तो हम ह्यूमन बीइंग नहीं सिखाया है, उसकी कोडिंग तो हमने ही करी है ना। और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने ये भी समझ में आया होगा कि कितना लीनियर अलजेब्रा, कितने सारे मैथमेटिक्स के ब्रांच हैं जो आपके कोडिंग में काम आते हैं।
जो आपका पूरा प्रोग्रामिंग करते हैं। हम अभी तक बहुत सारे बच्चे इसी कंफ्यूजन में रहते हैं, हम पढ़ क्यों रहे हैं ये सब, हम पढ़ क्यों रहे हैं। पहली बात आप इसलिए पढ़ रहे हो कि आपका डिस्ट्रक्टिव माइंड ना हो। जो मैथमेटिक्स का बच्चा होता है वो इतना सवालों में उलझा रहता है, इतना कैलकुलेशंस में, वो कभी डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता। तो आपको इसी कंस्ट्रक्टिव माइंड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मोर कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए यूज करना है। इसलिए सब बहुत डरा रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है सब डराते हैं यहाँ पे आके, ये भी कर लेगा, वो भी कर लेगा। 53 बिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी अगले साल तक ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जब भी कोई नया रिवॉल्यूशन आता है तो हमेशा डर लगता है, और सबसे ज्यादा सफरर मिडिल क्लास होता है। इसका मतलब जिनकी मिडिल टाइप की जॉब है वो है, अभी भी परेशान है, तो कोई बात नहीं ना, आप मिडिल से ऊपर का लेवल पकड़िए धीरे धीरे और अपने को एक्सपर्ट करिए, ऐसी किसी फील्ड में करिए जहां वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घुसे तो लेकिन आपकी जगह ना ले। तो इसलिए डरिए नहीं, उसको आत्मसात करिए। उस नॉलेज में कैसे आप परफेक्ट हो, कैसे आप मिसयूज ना करें। जैसे वो सब शोर मच रहा है कि चैट जीपीटी पे जाओ और थीसिस लिख दो एक ही दिन में, तो लिख दो। नॉलेज किसकी बढ़ेगी? क्या आपकी बढ़ेगी? क्या आप कहीं स्टैंड कर पाओगे? प्राइवेट कंपनीज आपकी नॉलेज के हिसाब से ही आपको लेती हैं, इस हिसाब से नहीं लेती आप थीसिस लिख के ले गए उसके सामने, आप बोल नहीं पा रहे, वो कहेगा बाहर। तो ये तो आपकी मर्जी है, आप अपने को डेवलप कराना चाहते हो तो चैट जीपीटी को दोस्त बनाओगे। अगर आप अपने को डेवलप ही नहीं कराना चाहते हो तो आप उसको दुश्मन की तरह आत्मसात करोगे कि आ कर और जा। तो ये आपके ऊपर है। तो इस पूरी कॉन्फ्रेंस में साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है आप सबके लिए। आई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी फ्रंटियर्स हैं उस पर ही बात हुई है। मुझे तो बार बार ये लगता है कि कभी भी जॉब गई नहीं है, हमेशा जॉब क्रिएट हुई। स्किलफुल लोगों के लिए हमेशा जॉब क्रिएट हुई है। जो नाकारा थे, कम जानते थे, जो अपने को अपडेट नहीं करना चाहते थे, वो पहले भी मरे थे, अब भी मरेंगे। तो इसलिए डरना काहे के लिए है? आप अपने को स्किलफुल बनाइए, बिल्कुल मत डरिए, और मेहनत करिए, और थोड़ी थोड़ी मौज मस्ती भी करिए। कर रहे थे आप लोग बीच बीच में, केवल मोबाइल पे लगे हुए थे, तो वो भी जरूरी है क्योंकि आप यंग हैं, यूथ है, आपको कोई रोक तो सकता नहीं है और रोकना भी नहीं चाहिए। पर जो आपकी डायरेक्शन है, जो आपका ध्येय है ज्ञान प्राप्त करना, उससे मत भटकिए। आप लोग सब अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद। Thanks to you, ma'am, for your insightful guidance and encouraging words. As we conclude this enriching workshop, it is time to reflect on our collective journey over the past sessions. I now request Head of the Department and the Chairman of this workshop, Professor Mukesh Kumar Sarma sir, to kindly read the report of the workshop and present the key highlights. मंच पर उपस्थित प्रोफेसर मृदुल कुमार गुप्ता जी, सीनियर प्रोफेसर, पूर्व प्रतिकुलपति ज्योति विश्वविद्यालय मेरठ, हमारे बीच में गेस्ट ऑफ ऑनर या डिस्टिंग्विश्ड या हमारे अपने अग्रज प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा जी, आज के वैलिडिक्टरी सेशन के कीनोट स्पीकर की भूमिका में रहने वाले प्रोफेसर जगदीश चंद्र बंसल जी, हमारे मुख्य अतिथि थोड़ा ट्रैफिक की वजह से लेट हैं, डॉक्टर केपी सिंह जी, और गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर अजय कुमार जी हमारे बीच शीघ्र ही पहुंचने वाले हैं। डीन फैकल्टी ऑफ साइंस प्रोफेसर जयमाला जी, प्रोफेसर शिवराज सिंह जी, डॉक्टर संदीप कुमार, कार्यक्रम का संचालन कर रही डॉक्टर स्वरूप कुमारी, प्रोफेसर तेजवीर सिंह जी, प्रोफेसर सुबोध कुमार जी, प्रोफेसर एच सिंह जी, अजेंद्र जी, कामेश जी, अनु जी और सभागार में उपस्थित सभी साथियों। चौधरी चंद विश्वविद्यालय मेरठ के गणित विभाग द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रंटियर्स इनोवेशंस इन फजी ऑप्टिमाइजेशन साइबर सिक्योरिटी एंड सिमुलेशन विषय पर एक 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आज उस कार्यशाला का अंतिम दिवस है, तो हम समापन सत्र में इस वक्त हम लोग हैं, और ये कार्यक्रम जो कार्यशाला 2 दिसंबर को शुभारंभ हुआ था। शुभारंभ में हमारी माननीय कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी, मुख्य अतिथि प्रोफेसर अविनाश चंद पांडे जी, जो कि इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर के निदेशक हैं नई दिल्ली में, उन लोगों के द्वारा इस कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। कार्यशाला में हमारे डीन
फैकल्टी ऑफ साइंस, डायरेक्टर एकेडमिक्स, डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोफेसर वीरपाल जी आदि सभी लोगों का सहयोग रहा। और कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के पश्चात कुल कार्यशाला में 25 सत्रों का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे 25 रिसोर्स पर्सन्स NITs, IITs, ISI, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रहे हैं। प्रथम सत्र जो हुआ प्रोफेसर सुजीत कुमार ISI हैदराबाद से, उन्होंने मॉडिफाइड गोल प्रोग्रामिंग अप्रोच फॉर सॉल्विंग मल्टी ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स पर अपना व्याख्यान दिया था। इसके बाद दूसरा प्रोफेसर अबू कुमार शाह जो NIT अगरतला से हैं, उन्होंने एंड ऑफ लाइफ सोलर PV चैनल्स जिसमें कि क्यू रंग ऑर्थोपेयर फजी डिसीजन मेकिंग अप्रोच की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रथम दिन तीसरा सत्र जो था डॉक्टर नेहा यादव ने बेसिकली जो बताया कि फिजिक्स इनफॉर्म न्यूरल नेटवर्क्स पिन्स PINS या GINS के और मशीन लर्निंग को एकीकृत करके किस तरीके से जटिल भौतिक प्रणालियों से जुड़े समीकरण या आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशंस जिन्हें कहते हैं, किस तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं। तो ऑडियो और वीडियो में डायरेक्ट उसका किस तरीके से एप्लीकेशन हो सकता है, इसके बारे में बात की। वर्ष कार्यशाला के दूसरे दिन जो प्रथम सत्र में IIT रुड़की से प्रोफेसर शिव प्रसाद यादव जी ने डुअलिटी थ्योरी इन ट्यूटनिस्टिक फजी मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग विषय पर अपनी बात रखी। दूसरे सत्र में हमारे प्रोफेसर SK पांडे जी थे, जिन्होंने AI ड्रिवन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स टू इंडियाज इवॉल्विंग थ्रेट लैंडस्केप पर अपना व्याख्यान रखा था, जिसमें उन्होंने किस तरीके से डाटा हमारे पास जो किस तरीके से कितने % हम क्या हमारे पास डेटा की अवेलेबिलिटी है, किस तरीके से जो हम AI बेस्ड बिहेवियर एनालिसिस की बात कर रहे हैं किस तरीके से की जा सकती है। और उन्होंने कुछ एक्ट के बारे में भी, कुछ एल्गोरिथम्स और AI से जुड़ी गवर्नेंस के बारे में भी बताया। तृतीय सत्र में दून यूनिवर्सिटी देहरादून से डॉक्टर कोमल ने डेवलपमेंट ऑफ इंटरेक्टिव मल्टी क्राइटेरिया ग्रुप डिसीजन मेकिंग और उसके एप्लीकेशंस पर अपनी बात रखी। इसके कार्यशाला के दूसरे दिन के जो फोर्थ सेशन था, उसमें REC रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज से डॉक्टर अनुराग शुक्ला, जिन्होंने हमें बताया कि ये जर्नी फ्रॉम इंटीरियर टू फ्रैक्शनल ऑर्डर सिस्टम्स पर अपना व्याख्यान रखा था। अंतिम सत्र में दूसरे दिन के अंतिम सत्र में थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पंजाब के डॉक्टर हरीश गर्ग ने एस्पेक्ट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर की डिसीजन मेकिंग किस तरीके से क्राइटेरिया अल्टरनेटिव्स का हमको सिलेक्शन करना है, किस तरीके से हम डिसीजन मेकिंग में ग्रुप या इंडिविजुअल या मल्टी स्टेज इस टाइप की डिसीजन मेकिंग होती है, किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है। कार्यशाला के तीसरे दिन में जो पहले सत्र में साउथ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर CS ललिता, जिन्होंने बेसिक्स ऑफ वेरिएशन इनइक्वालिटी के विषय पर व्याख्यान दिया। दूसरे सत्र में फरीदाबाद से डॉक्टर सुरेश कुमार ने इमोशन डिटेक्शन फ्रॉम टेक्स्ट डीप लर्निंग अप्रोच। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस AI टू EI, तो इमोशंस को भी क्या AI डिटेक्ट कर पाएगा, उसमें क्या संभावना है, इस विषय पर उन्होंने अपनी बात रखी। तीसरे सत्र में इंडस्ट्री से जुड़े एक पब्लिश सिर सैपियन गुरुग्राम के डॉक्टर अनिल कुमार जादौन, जिन्होंने जेनेटिक AI, हम लोगों ने कंप्यूटेशनल AI की बात की, कन्वेंशनल AI की बात की, जनरेटिव AI की बात की, एक्सप्लेनेबल AI की हम बात कर रहे हैं, फिर एजेंटिक AI किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं और क्या एक ये सेल्फ ऑटोनोमस टेक्निक है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, किस तरीके से वर्क करती है। चौथे सत्र में ITS से प्रोफेसर नैन्सी शर्मा ने साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस और AI बेस्ड डिफेंस मैकेनिज्म के विषय पर अपनी बात रखी। अंतिम सत्र में NIT उत्तराखंड के डॉक्टर धर्मेंद्र पाटिल ने बेसिकली हम लोग AI की बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी देखना है कि मेडिकल डायग्नोस्टिक या हेल्थ केयर, इसमें भी AI का क्या यूज है। तो उन्होंने फ्लूइड बायोफ्लूइड डायनेमिक्स विद AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, क्या मैथमेटिकल मॉडलिंग हो सकती है, या AI या मशीन लर्निंग किस तरीके से मैथमेटिकल मॉडलिंग में हेल्प करेगी। कार्यशाला के चौथे दिन प्रथम सत्र में प्रोफेसर अरविंद यादव ने सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिप्टोग्राफी इन साइबर सिक्योरिटी, दूसरे सत्र में DRDO से वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार, जिन्होंने फाउंडेशंस एंड टेक्निक्स ऑफ रिवर्सिबल डेटा हाइडिंग, हम डेटा की बात कर रहे हैं तो हाउ टू हाइड द डेटा, हाउ टू शो द डेटा, तो क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, क्या उसके फाउंडेशंस हैं, उसके विषय पर अपना व्याख्यान रखा। तीसरे
सत्र में डीआरडी सहित डॉक्टर सुमित कुमार ने कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू स्मार्टफोन थ्रेट डिटेक्शन एंड सिक्योरिटी एनालिसिस, बेसिकली कॉल्स आते हैं, कहते हैं मतलब किसी भी तरह की जो साइबर सिक्योरिटी फोन के थ्रू, स्मार्टफोन के थ्रू आजकल चीजें चल रही हैं, उसको हम किस तरीके से डील कर सकते हैं, क्या हमें सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स अपनाने चाहिए, उस विषय पर बात हुई। चतुर्थ सत्र में प्रोफेसर संजय कुमार त्यागी, हायर कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी यूए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उन्होंने फ्रॉम लॉजिक टू लर्निंग, basically first we call about logic after learning, so logic to learning, the evolution of AI and its transformative role in modern research, how can we use all these things in our research, इस विषय पर अपना व्याख्यान रखा। पंच जो फिफ्थ सेशन था उसमें प्रोफेसर मनीषपत त्यागी, शिकागो यूएसए ने, फ्रॉम ब्लैक बॉक्स टू ग्लास बॉक्स, एक्सप्लेनेबल एआई फॉर साइबर थ्रेट मॉडलिंग विषय पर अपना व्याख्यान रखा। और कार्यशाला के आज 5वें दिन जो कि चल रहा है, जिस सत्र में हम सब लोग बैठे हैं, आज प्रथम सत्र में टेक्सास यूएसए से आयुष उपाध्याय ने एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जिनकी बात आजकल काफी ज्यादा होती है, डिटरमिनिस्टिक एट स्केल फॉर साइबर सिक्योरिटी विषय पर अपना व्याख्यान दिया। दूसरे सत्र में डॉक्टर यूसुफ अंसारी डीआरडीओ से, जिन्होंने वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड डिफेंस मैकेनिज्म विषय पर बात की। जिस सभी सत्र जो अंतिम सत्र समापन सत्र चल रहा है, इसमें हमें बेसिकली 2 लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है, जिसमें प्रोफेसर जेसी बंसल जी कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस विषय पर अपनी बात रखेंगे, और प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा जी एआई की जो हम बात कर रहे हैं, क्या इंडियन नॉलेज सिस्टम में किस तरीके से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, या हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या महत्व है, या पुराने विषय पुराने हम बात करते हैं तो किस तरीके से रही है, इस विषय पर बात रखी जाएगी। तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोगों ने बड़े ध्यान से इस वर्कशॉप को इस तरीके से अटेंड किया है, और आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोगों को कोऑपरेशन, उसके लिए थैंक्स टू ऑल। थैंक यू। Thanks very much, sir, for such a comprehensive and insightful report. This workshop and its success is an outcome of your guidance and leadership. And now I ask our research scholar, Mr. Ashish, to formally introduce our honored keynote speaker, Professor J.C. Bansal. Thank you, ma'am. It's my honor to introduce Professor Thank you, ma'am. It's my honor to introduce Professor J.C. Bansal, professor at South Asian University, New Delhi, and visiting professor at the Liverpool Hope University, UK, as well as at NIT Goa. He obtained his PhD in mathematics from IIT Roorkee. Professor Bansal's primary research area are swarm intelligence and nature-inspired optimization techniques. He is well known for proposing the spider monkey optimization SMO algorithm, widely applied in various engineering domains. He has published over 70 research papers in reputed international journals and conferences. He is the editor-in-chief of the elsewhere journal Methods X, the series editor of 4 Spinger book series, and associate editors of journals including EAAI and Array elsewhere. He also serves as the General Secretary of the Soap Computing Research Society SCRS and has received gold medals at both UG and PG levels. Today he will speak on the topic computational intelligence. Please join me in welcoming Professor J.C. Bansal. Sir, please. Respected professors in the hall, the participants, Professor M.K. Sharma ji, thank you so much for the opportunity to speak here. It's a wonderful gathering, and particularly I'm excited to hear Professor Pawan about the AI perspectives, AI in the perspective of the Indian knowledge system. Let me start with
one verse, one shlok. Yaha shikha mayuranam naganam manyo yaha tadatva vedang shastranam gaditam murdha nishchitam. We are in the Department of Mathematics, so I think this verse justifies यथा शिखा मयूराणाम, जैसे मोर की शिखाओं में मोर की शिखा, नागानाम मणियो यथा, मणियों में नागमणि, तदत्व वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्ध निश्चितम. वैसे ही गणित सभी वेद और शास्त्रों में श्रेष्ठ है. और हम भाग्यशाली हैं. We are lucky that we are the student of mathematics. No matter whether in the current era artificial intelligence is becoming popular, yes, definitely, but it's an outcome of the inventions by the mathematicians. Believe me, computer science is just an outcome, just an extension branch of the mathematics. Without mathematics, computer science cannot move. In the US or in India, you people are maybe more aware than me that the researchers in the all Silicon Valley giants, they are hiring with higher salary to the mathematicians as compared to the software engineers. The mathematicians' salaries are always higher than the software engineers. Why? Because the researchers can develop the new technologies. The software engineers can only program. Once you have a deep learning algorithm, they can program efficiently, better than you, better than me. But who can invent this deep learning algorithm? Who can propose the artificial neural network system? These kind of ideas, these kind of verifications, justifications are coming from the mathematics. And as Professor Sharma told, I think somebody is spoken about the explainable AI also, right? So, who can work on the explainable AI? Why the people are now stuck with the AI? Reliability in the AI is a major issue. From last 6-7 years, I started my studies in the drone application of the swarm intelligence. In the drones, I'm working with the Indian Air Force also since 2019. And of course, we are very much successful also in the real world implementation of the swarm intelligence-based algorithm, particularly for the drone swarms. Now, when you are talking about the autonomous system, whether it is a drone or a car or any aircraft or anything, autonomous system, if it is governed by the artificial intelligence, if it is governed by the artificial intelligence or anything, whether it's a medical doctor, AI doctor, you must have heard about AI doctor. So, being a mathematics student, you people may understand that no matter which AI algorithm you are using, they use stochastic decision making, probabilistic decision making, and anything which depends upon the probability, which depends upon the random decision making, cannot be 100% reliable. Only the methods developed by you people, deterministic methods, derived methods, which are not using any random component, any probabilistic decision making, can be guaranteed to be the correctness. So just imagine a self-driving car, or just imagine a autonomous drone or drone taxi where the humans are sitting and they are governed by the AI. I will not sit in that aircraft. I will not sit in that drone. I will not sit in the self-driven car. If I fully understand the AI algorithm, because I know that every time the decision making is based on the probability. The probability of reaching there is very, very high. Very, very high to reach at the destination. It may be 99.9999, but it's never 100%. But when a human being is driving my car, I sit comfortably. I can just sleep. Now the explainable AI is coming. This is the reason why the world is looking for the explainable AI, so that these kind of black boxes, the deep learning or neural networks kind of black boxes, can be explained. And this explanation will come only from the mathematical studies of the existing AI algorithm. And therefore, the mathematical analysis of the available AI algorithm is becoming very crucial. And the world is looking for the mathematicians who can do that. You can browse my research papers. I have written 2 research papers on the mathematical analysis of the
my algorithm, particle swarm optimization, in which I am working, and one is the differential evolution. So particle swarm optimization or differential evolution, I did some mathematical analysis, but when I did this mathematical analysis, believe me, I took a very, very trivial case of the algorithm, not the actual case of the algorithm, not the actual AI algorithm, not the actual PSO algorithm I have taken, because this is the limitation of mathematical analysis that we cannot consider. If you are doing stability analysis or the convergence analysis, you cannot consider the random components. And this is the biggest hurdle right now in the mathematical analysis of AI algorithm. We need to work on the mathematical analysis, stability analysis, or convergence analysis of AI algorithm. We need to work on developing new convergence or stability analysis algorithms which are considering the random component, so that we can truly analyze the AI algorithms, so that we can justify, when the justification and the certificate is coming from a mathematician, that okay, you can sit in this car, this self-driven car, only then the people will sit comfortably. No AI algorithm can decide the path planning algorithm for the moon mission. It all depends upon the mathematical methods, deterministic methods, because all the probabilistic methods, all the AI algorithms comes with a warning that there may be an error. There may be an error. If I solve a problem, if you solve the same problem, same algorithm, your answer may be different, my answer may be different. So probability is there, because when I was solving, computer has generated different random number. When you are solving, computer has generated different random number. So it extensively depends upon the randomness. Extensively depends upon the randomness, and therefore, Professor Sharma, thank you so much for organizing AI workshop in the Department of Mathematics. And actually, AI must be taught for the mathematicians, because this is much required. Okay. So I have 30 minutes. I'll give you an idea of a special kind of artificial intelligence, which is called computational intelligence. When the intelligence emerges through intensive computation, then we call it computational intelligence. So in the computational intelligence, we study the design of intelligent agents. Intelligent agents means it's an artificial intelligence. But the artificial intelligence is created based on special kind of efforts, and those efforts are coming from intensive computation. Lot of computation we are doing, and we are making agents intelligent. This marker, mobile, anything is intelligent because of intensive computation. When you buy a mobile, when I bought this mobile, my name is Jagdish. So I started typing JA. It was not predicting Jagdish. But after the use of 15 or 20 days, it started predicting Jagdish. How? Because intensive computation. A lot of data it has taken and started that, okay, this person, whenever in this mobile, this person, whenever started JA, most of the time it is writing Jagdish. Right? So it started predicting. So AI algorithms predictions are mostly based on the intensive computation. So right now, whatever the wonders of artificial intelligence you are witnessing are actually because of the computational intelligence. Because of this computational intelligence, so computational intelligence is the study of the design of intelligent agent, which is general definition of the artificial intelligence. This, but how this intelligence is created? Intensive computation. And what this computation is doing? Actually, are making any agent intelligent agents. Any agent may be anything. Pointer, mic, table, kursi, human being, anything. Anything may be intelligent, but what makes them intelligent is these five properties. The entire goal of artificial intelligence based algorithm is to insert these five properties to an agent. If I want to make this pointer intelligent, if I can insert these five properties to this pointer, it can work like a human being. Right now, if I ask you that who is more intelligent, myself or this pointer, I think you will
point to me, right? I'm more intelligent than this pointer because I have certain properties which this pointer doesn't have. What if the properties which are making me more intelligent than this pointer can be identified and can be inserted to this pointer? Computational intelligence based algorithms are actually doing the same thing. These are the five properties which are being inserted to any device, to any agent to make that intelligent. The first property is whatever is judged is appropriate for its circumstances and goals. Intelligent agent always do whatever is good for them. I don't think that any chemistry student is here or chemistry teacher is here, right? No. Because they think that they should go in the lab, they should go to the workshops in the chemistry, not in the workshop on artificial intelligence. So you all are intelligent because you understand that AI workshop is good for us. Second property is flexible to changing environments. Suppose we are attending this valedictory and lectures, and most probably we will complete this very smoothly. But just imagine, our objective is to attend this workshop. But just imagine there is an earthquake, or there is a fire broke in this hall, right? What we will do? Environment changed. Now we will immediately rush from here. छोड़ो जान बची तो फिर दोबारा सीखेंगे बाद में सीखेंगे जान बचाओ पहले, right? We will not attend any lectures, we will not attend this valedictory session, we will save our lives, right? So we are intelligent because we know what is more important for us. What is more important for us? It learns from the experience. This is the soul of all AI algorithms. Learns from the experience. More the data, better the algorithm. Learn from the experience. It makes appropriate choices. If more than two choices are available, then I should be able to distinguish that which one is better. If more than two choices are there. So I already told you that computational intelligence is the computational part of the artificial intelligence. There is this subject has become so popular, computational intelligence word has become so popular that IEEE has a special society for this, IEEE Computational Intelligence Society, CIS, very successful. Many societies are there, but CIS has become very, very successful. This society has formally defined computational intelligence as any biologically, naturally, and linguistically motivated computational paradigm. Listen, whenever we develop any method, as a mathematics student, whenever we develop any method, we derive it. We are not motivated, we are not inspired. There are two kinds of methods. One is the derived method and one is the inspired methods. Derived method, whenever you write, Newton-Raphson method. Just take an example of a Newton-Raphson method. So how you can prove the Newton-Raphson method formula? Taylor series expansion, truncate, and you can write the Newton-Raphson formula, right? And you can justify, if I am solving using the same initial guess and same formula, same problem, and you are solving, we will both reach at the same solution after 10 iterations. If the initial guess is same. These are the derived methods. Just imagine another kind of methods where we are writing the equation. Newton-Raphson method formula you are writing x equal to x minus fxy f dash x, right? You write this formula, you derived it from the Taylor series expansion. But what if I can write a formula, similar kind of equation I can write, and there is no derivation, there is no mathematical background behind it. There is a motivation from the nature. There is a motivation to write an equation, a problem-solving equation from the nature, whether it is biologically, naturally, or linguistically. If they are inspiring us to write that equation directly with no mathematical background, no mathematical proofs, and still that equation or that approach is solving the problem, then this kind of approach, this kind of algorithm methods are called computational intelligence methods or nature-inspired methods. The most famous, this neural networks. All the wonders, ChatGPT or whatever you are looking at, they are actually the neural networks. Of course, the deep neural networks. Deep neural networks are coming and giving you so much help in artificial intelligence. Okay, of course, fuzzy system is there, evolutionary computation is there. Okay, so why
the computational intelligence is important because there are problems. You have a polynomial equation. If I ask you to solve a polynomial equation using Newton-Raphson method, you will easily solve that and will give me the roots, right? What if the function is not differentiable? If I give you a function which is not differentiable, if the function is not differentiable, will you be able to apply this method, Newton-Raphson method, to that problem? Nahin, na? Nahin. You can optimize using simplex method, right? There is a limitation that simplex, for the simplex method, the function should be linear. The constraint should be linear. If I ask you to apply any nonlinear optimization method, for example, suppose the Fibonacci search method, Fibonacci nonlinear optimization, right? You will not be able to apply this Fibonacci search method also to a problem if the function is not convex, quasi-convex. What I want to tell you that the real world problems not necessarily be linear, not necessarily be continuous, not necessarily be differentiable or convex or quasi-convex. If they are not, then these methods are not applicable. These methods are definitely giving best results, good results, correct results, deterministic results, but are applicable to a very restricted class of problems. If you really want to solve a real world problem, then these methods are actually not applicable. And therefore, we need to widen our method class, and the computational intelligence methods are coming as a rescuer, or artificial intelligence based methods are coming as a rescuer to solve the real world problems when you do not know even the properties of that function or the problem. Sometimes even the problem formulation is not there, modeling is not there. If you want to apply a solution method for solving a differential equation, then your problem should be modeled as a differential equation. Your problem should be modeled as a graph theory problem or an optimization problem or a polynomial equation problem. At least that model is required. But AI, the CI, is giving the tool even if you do not have the problem model. Just some data is required. But there is another drawback. ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं होता. ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं है. अभी कोई एल्गोरिथम ऐसी नहीं है जो ब्रह्मास्त्र का काम करती है. ब्रह्मास्त्र नहीं है, कुछ भी नहीं है कि चलेगा तो मारेगा, नहीं. Every algorithm, every method has a one or another problem. There is a very famous theorem, no free lunch theorem. Two US scientists gave no free lunch theorem, McCord and Walpole. They gave this concept of no free lunch theorem. This is coming from the Bible's statement that nothing comes free. Nothing comes free means if you have an algorithm, deterministic algorithm, you can apply to a very restricted class of problems, are not applicable to solve the real world problems. But if you have a probabilistic algorithm, these nature-inspired algorithm or AI algorithm, they are applicable to a wider class of problems. Even problem formulation is not required. But the inherent drawback is they are not giving you the guarantee of the correctness. They are not giving you the guarantee of the exactness. Means they will not give you guarantee that nobody else can find better solution than you. There is always a chance. There is probability may be very, very small, but there is always a chance that somebody can find better solution than you. Right? So computational intelligence are probabilistic algorithms, so applicable to wider class of problems. This is the benefit. This is the drawback. Okay, actually, the computational intelligence is the subject. Let me go back. This is the world status. I just took the data from Scopus research papers. So you can see that there is a significant jump in the around year 2000. In the publication. This is the publication data, and I hope you understand the publication data is the reflection of the application. Is the usefulness of any technology. Only then the people are publishing in that particular area. So after around 2000, the computational intelligence has become popular, and this is obvious. The reason is obvious. The reason is that you have the good computational power, because all these algorithms are requiring the intensive computation I told you, and when intensive computation is required, you should have a good computation power. And nowadays, the computers, laptops,
server level or supercomputers are very have very high computational power, and therefore these algorithms can easily be applied, can easily solve very large problems also. And of course, this is the status of India, and you can see that in India, we realized this trend in around 2005 or so. In around 2005, even 2007, 8 years lagging. We are lagging behind the world. We understood this trend later, much later than the world understood, and therefore we have a lot of scope of working in the artificial intelligence based algorithm or CI algorithm, particularly in India. You see that the publication record is around 6% from India. We are contributing around 6% in the world publications in the AI or CI. The contribution of India is around 6%, and we are around 17% of the world population. Indian population is the 17% of the world population. I hope you understand the ratio is not satisfactory. We have still a lot of scope of research and development in the field of AI in India. Yes, sir. मैंने 2015 तक का ही डेटा लिया था इसलिए ये सफिशिएंट नहीं था उस वक्त, क्योंकि शायद 90 या 90 में 80 में लिया था, ऐसा किया था। तो इसलिए नहीं, ये नहीं है, सिर्फ ऊपर ही आगे अगर 25 तक का डेटा लेंगे तो इसके आगे मतलब ये प्रोग्रेसिव है। ये इसलिए डाउन जा रहा है कि अगर मैं 20 ऐसे अगर जनवरी में 25 का डेटा लूंगा, हां तो जनवरी में 25 का डेटा लूंगा तो बहुत कम मिलेगा ना। हां वो सिर्फ but it's progressive. We are in the exponential growth. Definitely we are in the good growth in India, but still the growth rate is not sufficient as compared to the world's publication record. Actually, usually, people are saying that a lot of research has already been done. AI has just started. Believe me, AI has been just started. A lot of to be done. Okay, so broadly, the CI algorithm, the CI techniques can be classified as the broad aspects: the artificial neural network systems, evolutionary, artificial swarm intelligence, artificial immune system, and the fuzzy systems. Particularly, I am a student of swarm intelligence and evolutionary algorithms. So I'll speak more on swarm intelligence or the evolutionary algorithms. Artificial neural network system, I think you already have, Professor Sharma mentioned the summary, and I realized that a lot of people have already spoken about the artificial neural network system. All these systems are actually nature-inspired systems. Remember, the natural, the CI techniques, the IEEE definition, biologically, linguistically, or naturally motivated algorithms. Naturally motivated computational paradigm. These are the computational algorithms. Remember, a lot of computation is there in all such algorithms. And we require a lot of data also, particularly for the artificial neural network system. Here at any university, assistant professor salary, suppose, assistant professor salary is much lower than the full professor salary, right? Why is this so? जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर को तो अपने बच्चे भी पढ़ाने होते हैं, प्रोफेसर के बच्चे तो पढ़ चुके होते हैं। Why the professor salary is higher than the assistant professor salary? दोनों ने PhD किया है। Actually problem ये है कि this is the reason. What is the ANN? जो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस है उसकी नॉलेज उतनी ज्यादा है, वो ज्यादा जानता है, learns from the experience. It learns from the experience. It was a property. So artificial neural networks are all is a class of algorithm. It's a class of algorithm. Remember, it's not a single algorithm. It's a class of algorithms. So which learns from how the human brain works. एक साल का एक बच्चा है, मैं एक चौराहे पे खड़ा हूं मान लो, एक 5 साल का बच्चा है और एक 50 साल का आदमी है। मुझे कहा कि मैं मेरठ यूनिवर्सिटी जाना है मुझे, तो वो बोल रहा है इधर जाओ, और जो 50 साल का आदमी बोल रहा है वो इधर जाओ। मुझे किसकी बात सुननी चाहिए?
50 साल वाले की, क्योंकि मुझे ये पता है कि 50 साल वाले आदमी के पास 50 साल का एक्सपीरियंस है, इसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, इसके पास 5 साल का है, इसके पास 50 साल का है. Neural networks works with that. So it learns from the data, and based on that it predicts or it solves the problem. Of course, the problem may be of anything. It may be a classification problem, clustering problem, or the prediction problem. Another category is this evolutionary computation. I just request madam, anybody who is chairing the session, मुझे बता दे, क्योंकि मैंने कितने बजे शुरू किया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, है ना. Another category is this evolutionary computation, where the algorithms are inspired by the evolution of the human beings, how we evolved. जितना दुनिया के बारे में मेरे 10 पीढ़ी पहले लोगों को मालूम था, उससे ज्यादा मुझे मालूम है, because I have lot of things I can read from the internet, I can read from the other things. Humans are evolving, and what is the phenomena, what is the special thing among us, so that we are evolving? Every generation we are becoming better. Maybe in terms of the technology, in terms of the informed decision making, and so on. If this can be identified and modeled in an algorithm, then it's a evolutionary algorithm. Very famous algorithm in this category is the genetic algorithms. I think many of you must have heard about genetic algorithms. Genetic algorithms is inspired by the Darwin's principle of the survival of the fittest. The rule is very simple: survival of the fittest. Suppose there is a one professor position in mathematics department open, right? And suppose there are 10 people who are applying for this. Suppose there is a one professor vacant position in the mathematics department of Meerut University, and 10 people are applicants, right? Before the interview, all the 10 people will compete with each other, and will make themselves try to make themselves better and better, so that they can compete with the other 9. Right? Everybody will try. This is the competition. Intelligence also emerges. Intelligence emerges through competition. So, all the evolutionary algorithms are based on this competition, survival of the fittest. Whoever is the fit will survive. But just now imagine, if we have only one applicant and one position, then what he will do? मेरा तो होना ही है, मैं अकेला एप्लीकेंट हूँ, मेरे में क्यों शाम को रात को बिल्कुल शांति से सोएंगे, है ना? कोई टेंशन नहीं है सुबह जाकर के, जैसे कपड़े भी शायद चेंज ना करें, कोट भी ना पहने, ऐसे जैसे जीन्स में आ जाएंगे, है ना? क्योंकि उन्हें ले नहीं है, उन्हें एक पोजीशन ले लेना, मेरे को लेना है, तो I will not make myself better. Means the intelligence will not emerge if there is not a competition. So competition makes individuals intelligent. This is the reason why we are becoming better. Of course, there is a very famous writer, Yuval Noah Harari. How many of you heard about that? Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari की एक latest book आई है, Nexus. वो जरूर पढ़ना. Those who are interested in artificial intelligence. Nexus, Nexus. और his brief history of Homo sapiens. Was his first book. In that he wrote this, particularly he wrote this evolutionary, about evolutionary and about swarm intelligence. He mentioned particularly that just imagine a situation. There is a one monkey on the lonely island. There is a one monkey on the lonely island, and another situation when one human being on the lonely island. The probability of the survival, whose survival is high? Tell me. Human being or monkey? Monkey. That's right, sir. If the two are there, then monkey. Then still monkey. Just now imagine, reverse the situation. 1,000 people are there and 1,000 monkeys are there. Now the probability of humans will increase. Now the probability of survival of the humans will increase, because we can communicate, we can make decisions, we can do people can start agriculture there on that island and will survive. Monkeys will not do. After exhaust
After the existing resources are exhaust, monkeys will die out. The humans will not. Humans will not. Actually, we have the competition, but simultaneously, we also have the another property, that is the swarming behavior. Swarming behavior means we can collaborate also. We can collaborate also when the issue of the survival occurs. If there is issue of the survival, COVID हुआ था, right? So when in Delhi most of the year bird flu occurs, right? For a certain period, for 10-15 days, bird flu occurs. It's spread. Bird flu occurs. Spread. So I live in Basant Kunj. There is a very close by lake, Sanjay one. Right. So Sanjay one, Sanjay Lake is there. So usually I used to go walking there. So they kill those birds, ducks. They kill those birds whenever bird flu is there. Then COVID happened. No government killed the human beings. Right. तरीका भी ये था ना कि जिन लोगों को कोविड हुआ था पहले उनको मार देते थे, है ना? यही था ना. But we have not killed ourselves. We do the collaboration. The scientists have developed the vaccine. Teachers started teaching online. Police is doing their job. Politicians are doing their job. Survival. So collaboration is also there. So another kind of emergence of the intelligence is the swarm intelligence. Another kind. This is also one kind of problem-solving approach that is called swarm intelligence. When there is a group of individuals and they collaborate with each other, they do not compete but collaborate with each other. The concept is very simple. Suppose this wall is to be made, and I say that one person makes this wall in 10 days. The simple rule is, suppose one person makes this wall in 10 days, then 10 persons will make this wall in how many days? So swarm intelligence is giving you, sir, the solution. If somebody has studied the swarm intelligence, or if somebody is applying the swarm intelligence among those 10 people, then the wall can be made in less than 1 day. That's an intelligence. If it is equal to 1 day, then it means they are not collaborating with each other. If they will collaborate with each other, then definitely one kind of intelligence will emerge, and the problem can be solved more efficiently. So swarm intelligence is giving you an efficient solution. So, but how to define this collaboration is a matter of study. And this is the algorithm. Many people have developed many algorithms. Many people have developed the algorithm for this collaboration. How to define the collaboration among those 10 people? Particle swarm optimization is inspired by the birds flocking behavior. How the birds fly together? They collaborate with each other so that in a fraction of a second, they take the decisions to move in a particular direction. Spider monkey optimization is the one algorithm which we proposed in the year 2014 with myself, my two PhD students when I was in IIIT Gwalior, and one French scientist, Maurice Clark. So we 4 people proposed this algorithm, spider monkey optimization, which is inspired by the foraging behavior of spider monkeys. Spider monkey means it's a special species of the monkeys which live in a deep forest, and they live in the group of 50 to 60 individuals. They collaborate with each other in search for the food, and their behavior is very unique. That is called the fission fusion. If the time will permit, I'll explain more on this. Another algorithm is this artificial bee colony algorithm, which is inspired by the honeybees foraging behavior. How the honeybees communicate with each other. They do the communication through 3 kind of dances: waggle dance, round dance, tremble dance. So 3 kind of dances, they communicate with each other and they collaborate with each other. That one bee says that I found the particular flower in this direction at this place, and this much nectar is still there to go there. So this increases their efficiency. They save the time in search. Every bee doesn't search. Some bees search and other bees exploit. So they collaborate with each other. They do the problem solving efficiently. Ant colony optimization, you must have seen the ants always find the shortest path from one point to another, their nest to the food source. They always find the shortest path. And this ant colony optimization algorithm is actually the wonderful algorithm in particularly the path planning problems. Path planning problem, maybe drone path planning problem, the
scheduling problem, the city bus scheduling problems, airport scheduling problem, so for the discrete optimization, particularly for the discrete optimization problems, ant colony optimization algorithm is wonderful. Other three algorithms are good for the continuous optimization problems. Okay. Do I have some more time? Okay. So I just want to take 2 minutes for showing the some wonderful applications, or if I have in this. Yeah, here is this is drone swarm. Some recent success stories of the swarm intelligence or the evolutionary algorithm I want to share. That first is the swarm drone or the drone swarms, where a group of drone is flying autonomously, swarm of drone is flying autonomously, and they are collaborating with each other. One drone has one capacity, another drone has another capacity. They are collaborating with each other, sharing the information in real time, autonomously, and solving the problem or executing some task. Maybe it is for defense or for civilian purpose, whatever the purpose is there, but they are solving the task autonomously. And both are from the DRDO, right? So you people know better how the DRDO is contributing a lot in the drone swarm. They have a very recently a new project also of the drone swarm. Japan's bullet train, Shinkansen N700 train. You can see the first in this first train that node shape design is designed by the genetic algorithm. This aerodynamic shape was designed by genetic algorithms, evolutionary algorithm, and it is still the best design, best possible design. Nobody could find better design than this, better design than the genetic algorithms. And for some time, when this was initially introduced, this train, Japan train, bullet train was proposed. This paragraph is just taken from that website, Japan Railway website. They put this paragraph on the Japan Railway website that thank you genetic algorithm, to say thank you to the genetic algorithms, that otherwise they could not solve the problem. They have not solved the problem, then they find this solution actually. And then there are many other application areas in the railways, like design, scheduling, allocation, fault diagnosis. Wind farm, I have also solved one problem using the one evolutionary algorithm, biography-based optimization BBU. The wind farm layout optimization problem means there is a wake effect of one wind turbine to the another. So if one wind turbine is here and one wind turbine is here, it has the impact on this, capacity on this. So what should be the ideal position, optimal position of the wind turbines in the minimum possible area so that total power output of that particular farm is maximum? And the BBO gave actually the best solution for that. So there are many application areas. At last, I want to tell you that there is no free lunch theorem. There is always a scope of the development. There is always a scope of improvement. Nature has enough scope to understand and to write the algorithms. And so, if you have a new problem, I just want to say that see the nature, and you will have a new solution methodology. Thank you so much. Thank you. If the question answers are there, then I'm okay to take. Otherwise, should I take the? No. Thank you.
लेकिन Colonel. मेरे बंधु प्रोफेसर शिवराज जी, जो भारतीय ज्ञान परंपरा के दृष्टिकोण से जो व्यवस्था सरकार ने बनाई है के लिए सन्नत हैं। कल दिल्ली में थे, संयोग से मेरा उनसे मिलना हो नहीं पाया। हमारे दोनों की व्यवस्थाएं अलग अलग हुई। अन्य बंधु भगिनी प्यारे विद्यार्थी, मैंने फिर कहा कि मैं अकिंचन हूँ गणित के क्षेत्र में। अकिंचन यानी जिसको आप लोग बोलते हैं बिल्कुल खास तार, धूल के कण जैसा, जिसको कोई तमीज नहीं। गणित में आज भी मुझे अपनी सैलरी का हिसाब लगवाना होता तो मुझे इसको बोलता हूँ यार सैलरी सही लगाई है, कम ज्यादा हो गई। ये कहता भैया कम कर दिया। मैं अपने भाई को बोलता हूँ कि यार इतने पैसे में से कैसे होगा, बल्कि तो मैं उस तरीके का गणित जानने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा ऐसा क्षेत्र है कि मुझे जैसा किंचन को भी गणित के बीच में IIT में, IIT में, IIM में बोलने के लिए मौका दिलवा देती है। सनातन परंपरा के साथ जोड़ने का यह सबसे बड़ा बेनिफिट है। मैं बार बार कहता हूँ संस्कृति और सभ्यता का जो भेद है, संस्कृति आपको स्थापित करती है और सभ्यता आपको स्थापित करती है। ये महत्वपूर्ण भेद है, ये हमें समझना चाहिए। तो शायद मैं संस्कृति के पक्ष की बात कर रहा हूँ, संस्कृति के पक्ष का गुलामी हूँ, इसलिए आप सब लोग मुझे बीच में बुला बुला कर स्थापित करते रहते हैं। मैं वस्तुतः यहाँ के लिए अतिथि नहीं हूँ, मेरी मातृ संस्था है। तो मेरा सौभाग्य है कि आप लोग मुझे बुला लेते हैं। मैं पिछली बार भी विभाग में था, आज भी हूँ। मैंने देखा था कि 25-30 मिनट मुझे बोलना है, तो मैं बहुत ज्यादा बात नहीं रखूंगा। कोशिश करूंगा कि समय में समय ढूंढ विषय को, नहीं तो ज्यादा पड़ेगा तो फिर लंबी बात जाएगी। दो अन्य विद्वान अभी हैं,
आप आए हैं, बोलेंगे, फिर आपको जाना भी होगा। तो मैं कुछ बातें आपके सामने सूत्र रूप में लिख सकता हूँ। मैंने फिर कहा कि मैं गणित का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इनमें से किसी का भी, विज्ञान का किसी का भी ना तो आदमी हूँ, ना विद्यार्थी रहा हूँ। 10वीं तक जितना सामान्य ज्ञान पढ़ा जाता है उतनी मैंने पढ़ा है, लेकिन मैंने भारत पढ़ा है। आपने जितने अभी बंसल साहब ने जितने सूत्र रखे हैं, मैं उन सबके संदर्भ संस्कृत सामने में से जोड़ सकता हूँ प्रमाण सहित। इन समय का अभाव है, ऐसी 4-5 विषय आपके सामने रख। विश्व की सबसे पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्येता कौन? निश्चय ही आप किसी पश्चिम का यदि नाम बताएंगे तो किसी पश्चिम की स्त्री या पुरुष का नाम बताएं। यही प्रॉब्लम है। भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वह यह है कि वो बाहर, मैं बार बार कहता हूँ, सभ्यताएं बाहर देखना चाहती हैं और संस्कृतियां अंदर उतरना चाहती हैं। जरा भारत के बारे में ढूंढिए कि पहली विश्व की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाली महिला कौन? तो आपको आश्चर्य होगा, भगवान सूर्य नारायण, जो रोज हमको पृथ्वी के घूमने से हमारे सामने रहते हैं और फिर हमसे विलुप्त हो जाते हैं। उनकी पत्नी संज्ञा इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेसर, पहली। मैंने फिर कहा कि मैं आपकी तरह विज्ञान पढ़ता नहीं हूं, लेकिन मैं संदर्भ ढूंढता हूं। उन्होंने अपनी जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी भी लड़कियां लड़के बन रहे हैं वो हवा में नहीं बन रहे, वो किसी न किसी का आकार है, उस आकार की प्रतिकृति बन रहे हैं। संज्ञा ने अपने मायके जाने के लिए सूर्य नारायण से अनुमति मांगी। But she decided to go. अब एक बार मातृशक्ति तय कर दे तो कौन रोके? उन्होंने तय कर लिया जाना है, तो उन्होंने कहा जाऊंगी। गर्भवती की चिंता मत करो, आ रही। उन्होंने अपनी जैसी दूसरी स्त्री निर्माण कर दी, बिल्कुल डिट्टो, और उसको छोड़कर चली गई। अब पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोफेसर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएशन कर दिया, लेकिन जगदीश भाई बोल रहे थे और भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप बोल रही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीमाएं हैं। वो सीमातीत नहीं है, असीमित नहीं है, उनकी सीमाएं हैं। जितना बोल डालोगे उतना मीठा होगा। आपके पास जितनी क्षमता है तो उतनी प्रोग्रामिंग आपने कर दी, वो उतना ही करेंगे। तो संज्ञा जी के पास जितनी प्रोग्रामिंग थी उतनी उन्होंने कर दी, लेकिन भगवान सूर्य नारायण उस समय मायावियों की श्रेणी में आते। मायावती यानी मास्टर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पति। उस समय वो जब वो रात को शयन कक्ष में आए, सहवास हुआ, तो समझ में आ गया। उन्होंने पूछा कौन हो? She couldn't answer properly. Then he find out this is not my actual पत्नी। और जो हम मंत्र पढ़ते हैं, नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम हिमाग्रजम छायामातंडसंभूतम तम नमामि शनिकरम। आज की तारीख में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट महिला संतान उत्पन्न नहीं कर, लेकिन छाया नाम था उनका, उन्होंने शनिदेव को उत्पन्न किया। She was the first son of artificial human. प्रथम कृत्रिम स्त्री के पुत्र हैं। और आपको पता होगा, जिन्होंने श्रीमद् भागवत, महापुराण, महाभारत, भारत के पुराण परंपरा को पढ़ा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मां से पैदा होने के कारण उनको देवत्व प्राप्ति के लिए लंबे समय तक
संघर्ष करना पड़ा। वो देवत्व तो मिला इन बड़े संघर्ष के बाद। इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया कि हमारे यहाँ इन विषयों पर काम होता था। समस्या ये रही कि मैं 1760 में एक विलियम जोन्स आए भारत में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चीफ जस्टिस थे कलकत्ता में, तीसरे चीफ जस्टिस थे कलकत्ता में। उनका मुख्यालय उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बाद में भारत के लिए किया, स्थापना की, 10 साल भारत रहे, बड़ा काम किया उन्होंने। उनकी आलोचनाएं भी होती हैं, आलोचना भी होनी चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने भारत के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें। उनका समग्र है 13 खंडों में, जैनमुख नाम के व्यक्ति ने कंपाइल किया है, 6 खंड अकेले भारत के ऊपर है। उसमें वो लिखते हैं कि हिंदुस्तान में 2 प्रकार के पंडित पाए जाते। आज की तारीख में हम पंडित, हम आचार्य जो पंडित, एक वो जो अनुसंधान करते हैं, एक वो जो सुने सुनाए को कॉन्फ्रेंस में सुन लिया जाके बोल दिया, रेफरेंस ढूंढने की कोशिश नहीं करते। भारतीय ज्ञान परंपरा में यही बात चल रही है कि आप बात कहिए, कोई परेशानी नहीं, लेकिन आपके पास जो बात कह रहे हैं तथ्य का तथ्य यदि आपके पास नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू एस्टैब्लिश योर डिस्कोर्स। तो प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द होगा। अगर आप हंसी के विलियम कहता है कि मेरे पास 2 प्रकार के पंडित आते हैं। कैसे आते हैं? जो आए दूसरे आते हैं जो मेरे साथ बैठते हैं और गंभीर चर्चा करते हैं। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि प्लीज मुझे पानी पर बात कीजिए, तो वो कहते हैं पानी तो महापन है, तुम पानी समझ नहीं, पानी पढ़ने का विषय नहीं है, पानी साधना का विषय। पानी के लिए आपके पास साधना होनी चाहिए। और फिर लिखा है कि वो मुझे कुछ समझाते हैं, एस्ट्रोनॉमी के बारे में समझाते हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझाते हैं, गतियों ग्रहों की गतियों के बारे में समझाते हैं। वो चले जाते हैं, फिर 10 में पता है कि उनके जाने के बाद वो नोट बना लेते, सामने नोट बनाएगा तो ब्रिटेन छोटा हो जाएगा ना भारत के सामने। पश्चिम का सारा ज्ञान, जितना भी ज्ञान है जो काम कर रहे हैं, मैंने कहा मैं आप लोगों की तरह विज्ञान में काम नहीं कर रहा, लेकिन पश्चिम का सारा ज्ञान जितना भी है वो मैक्सिमम जो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ज्ञान है सब पाणिनि के अष्टाध्यायी पे, सबसे ज्यादा रिसर्च में पाणिनि के अष्टाध्यायी पर हो रहा है। हम पाणिनि के अष्टाध्यायी को पढ़ते भी नहीं, पढ़ाते भी नहीं, हमें पढ़ना भी नहीं। बंसल साहब मुझसे कह रहे थे कि मैं व्याकरण पर आपके विश्वविद्यालय आऊंगा, आइए आपका स्वागत। हम सरलीकृत तरीके से व्याकरण को पढ़ना, समझना और उसके आधार पर जो संस्कृत भाषा में सूत्र हैं जिनको आप फॉर्मूलाज बोलते हैं उनको सॉल्व करने सिखाने के लिए मैंने कहा है कि आप जो ज्योतिष विभाग के लोग हैं क्या आप पर काम, तो संस्कृत में भी हम ढूंढना शुरू करेंगे तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो सारे सूत्र मिल जाएंगे जिन पर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विद्वान काम कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, सीता माता जब भगवान राम दंडकारण्य वन में पहुंच गए, पंचवटी तो तय हो गया कि अब यहाँ से लीला प्रारंभ कर, लीला प्रारंभ करनी है तो करना क्या है? तो उन्होंने जो एक्चुअल थी उनको कहा कि अब तुम कहीं अग्नि में विश्राम कीजिए, क्योंकि जो आगे की कथा है, जो आगे के प्रसंग है वो आपके द्वारा अब व्यवस्थित रूप से संचालित संपादित नहीं किया जाता। उन्होंने भी फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिल्कुल डिटो सीता बनाया, इसको लक्ष्मण भी पहचान नहीं पाए, कोई नहीं पाए। मैं जो निवेदन करता हूँ बार-बार कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जैसे मैडम ने कहा, आप सब कहते हैं घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्न्ड बाय द ह्यूमन बीइंग, कंट्रोल्ड बाय द ह्यूमन बीइंग, क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग, नहीं होता। इसलिए शास्त्र में उसको
सीमित रहा है। जो जानते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनको नहीं करता। इसलिए भारतीय परंपरा में, भारतीय शास्त्र में ईश्वर को मायावी कहा गया। कि जीव और जो जगत है उसको मायावी कहा गया। ऋग्वेद में भी करते हैं, कौशल्य है। इस प्रकार का उच्च कोटि का कौशल्य जो असली और नकली में भेद ही नहीं होने दे, इसलिए माया मोह लेती। बाद में भगवान बुद्ध ने और भगवान बाद में महात्मा कबीर ने यही कहा, माया माया ठगनी हम जाने, क्योंकि मोह लेती है। इतना स्किल्ड है, इतना कौशल से निर्मित की गई है कि आपका मन नहीं करता, लगता है कि और देख रहे हैं और सुन रहे हैं। माया है। लेकिन जो माया को समझते हैं, जो माया को कंट्रोल करते हैं, जो नियंत्रित करते हैं, उनको माया पति कहा गया। इसलिए भारतीय परंपरा में ईश्वर मायापति है। वो माया से वशीभूत नहीं होता, उसको माया नहीं ठग सकती, माया को ठगा नहीं सकती। दूसरा एग्जाम्पल कर्म आता। इसलिए जितनी प्रोग्रामिंग की है, सीता होती पता है कि सोने का घर नहीं होता, लेकिन प्रोग्रामिंग की गई सोने का घर या कोई भी अक्षित तुम्हारे सामने आएगी तो तुम उसके प्रति आकर्षित हो जाना, क्योंकि लीला वहीं से प्रारंभ होगी। इसलिए आर्टिफिशियल थी, तो जैसे ही सोने का मन रखा आकर्षण हो गया और उन्होंने कहा मुझे बात चाहिए। भगवान ने कहा टेस्टिंग शुरू हो गई। जो प्रोग्रामिंग की है वो सही है। दूसरी बात एक्चुअल होती, मैं फिर कहता हूं शास्त्र पढ़िए। शास्त्र को पढ़ेंगे नहीं तो चीजों को नहीं कर पाएंगे। पिताजी ने किसी भी बात का ना तो मायके में ना ससुराल में उल्लंघन नहीं किया। यदि एक्चुअल होती और वो क्या कहते कि लकीर से बाहर नहीं आना है, ठीक, तुम नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि लक्ष्मण रेखा थी, वो सीता जी की सीमा थी। वो लक्ष्मण रेखा टेक्निकली सीता जी के लिए नहीं थी, लक्ष्मण के द्वारा जो की गई वो के लिए मैंने मुकेश से पूछा, मुझे भाई करना क्या? मुकेश ने मुझे 3 स्टेप बताए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे होती है, हमें फिर उसकी लॉकिंग, क्या कोडिंग, डिकोडिंग कैसे होती है, वो सब चीजें। तो जो रेखा थी टेक्निकली इस प्रकार से बनाई थी लक्ष्मण जी ने कि सीता जी सकती हैं, दुनिया उसका कोई पासवर्ड नहीं। लेकिन बाहर का व्यक्ति अंदर जाएगा ध्वस्त हो जाएगा। जैसे बहुत सारे उपकरण होते हैं या होते हैं जो बहुत खाने में अलार्म बच जाएगा। आपके भी उच्च कोटि के मोबाइल में जामिया में मुझे बड़ा मोबाइल दे दिया, मुझे उसी की चिंता होती थी, 1.25 लाख का मोबाइल था, 8,000 का मोबाइल हो जाएगा, कोई बात नहीं। 1.25 लाख का मोबाइल चलाना हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको पता नहीं क्या करना पड़ेगा। अब मुझे ये सब चीजें पासवर्ड वगैरह याद नहीं रहते। ये जैसे ही है, यदि सीता रेखा लक्ष्मण रेखा के अंदर कोई घुसने का प्रयत्न करेगा राम भी जानता था, लेकिन राम डिकोडिंग नहीं जानता। वैज्ञानिक तो वो भी था, डिकोडिंग नहीं जानता। इसलिए राम ने कहा तुम महाराज के भिक्षा दो, सीमा के रहने वाले लोगों से मैं भिक्षा नहीं देता।
अब यदि ये एक्चुअल होती तो आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। क्योंकि प्रोग्रामिंग इतनी ही थी कि तुमको मेरी बात सुननी है, यदि सामने वाला से क्या जाएगा। आपने कहा है जगदीश जी ने कि बार बार जे डालूंगा, वो समझ जाएगा कि जगदीश के लिए कर रहे हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पता नहीं कि JAGAT जगत भी होता है, JAGNU जुगनू भी होता है, JUG जुगनू भी होता है। लेकिन क्योंकि बार बार करने में अपने में 20 साल किया और अचानक जगदीश ही आया, तो फीड हो गया कि जगदीश ही होगा। ये वैसे ही है, उनको पता है कि मुन्ने कितना मायना, ठीक है, तो कोई नहीं आऊंगी, अगर पता नहीं आऊंगी तो तुम बिना तुमसे भिक्षा नहीं लूंगा। इस संस्कृति में बिना भिक्षा के लोग फंसता है। तो प्रोग्रामिंग कितनी थी, एक्चुअल होती तो आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती तो रावण लेके नहीं आता। तो जिस कारण से जन्म लिया गया था पृथ्वी के बाहर आने के लिए, आगे नहीं पिक्चर में होता है बसंत की ताने में बैठाती ही नहीं। बैठेगी ये कहती है जो रोग नहीं है, आते नहीं तो रावण मत नहीं, रावण तो विष्णु जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो प्रोग्रामिंग आपने कर दी है नहीं चलता, कुछ नहीं करना है। तीसरा एग्जाम्पल, नारद जी भगवान के पास आए, भगवान विष्णु के पास, तो मुझे तो शादी वादी का मन कर रहा है। तो उन्होंने कहा नारद तुम यार शादी क्यों करोगे, तुमको तो अन्य अन्य कामों के लिए उत्पन्न किया है ब्रह्मा जी माना तो करो, बोले नहीं करो। अब भगवान को समझ में आ गई कि समय मानेगा नहीं। अच्छा बाहर ऐसा ही होता है, वो जिसने पकड़ लिया तो पकड़ लिया। भगवान ने कहा ठीक, उन्होंने मुझे बहुत सुंदर बना दो, आपके जैसा रूप, तुम मुझे हरि का रूप दे दो, हरि बंदर को भी बोलते हैं संस्कृत। भगवान ने कहा था तू, अब भगवान ने कहा कि विवाह करना है तो इसका मुंह बंद करना होगा। उसके लिए भगवान ने माया की नगरी बना दी। माया की नगरी बन गई। नारद जी गए, पता पड़ा क्या हो रहा है, अरे बोले राजकुमारी बहुत सुंदर है। राजा ने घोषणा कर दी जिसको पकड़ेगी उसी के साथ राजपाट लेकर राजा जंगल चला गया। नारद जी का यही मौका, नारद जी भी शामिल हो गए। अच्छा नारद जी को तो पता था कि बिल्कुल अद्भुत सुंदर रूप लेकर लौटा हूं मैं। नारद जी बैठ गए, भगवान भी आ गए। तो कुछ आर्टिफिशियल है, वो सस्टेन नहीं कर रहा है, इसलिए आर्टिफिशियल है। कृत्रिम है, सस्टेन कर जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। कितना हो पाएगा मैंने कहा आपको बताया, शायद से ज्यादा वास्तविक नहीं हो सकती जो संतान पैदा कर रही है। हम कितने दिन में आर्टिफिशियल महिला से संतान पैदा कर पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हम उस तक काम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो वास्तविक नहीं है। नारद जी के सामने से निकल गई, वरमाला डाली। नारद जी ने बहुत आगे किया है, डाला ही नहीं, भगवान के गले में जाकर डाल दिया। नारद जी को बहुत क्रोध हुआ। नारद जी ने अपने जाकर रूप देखा जल में, तब नारद जी को और भी क्रोध था, लेकिन मैंने तो विकृत कर दिया, मैं तो सुंदर मानता था, इन्होंने मुझे सुंदर कर दिया, इसलिए राजकुमारी ने मुझे वरा नहीं। फिर भगवान के पास, भगवान को जाके मैंने बड़ा अनशन किया और भगवान को श्राप दिया कि पत्नी की विरह व्यथा क्या होती है ना, तुम समझोगे नहीं। हाँ लेटे रहते ना सरैया आपकी पर, शेषनाग की पैया पर माता पैर दबाती रहती है। मैं आपको श्राप देता हूँ, जैसे आज मैं स्त्री के वियोग में व्यथित हूँ तुम भी होगे। यह भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नारद जब लौट कर आए गुफे में, देखा वो तो जंगल है, उनका अभी तो था, तब चेतना लौटी, तब ध्यान आया कि आज तो अनर्थ हो। भगवान ने कहा नारद
तुम्हारे भी श्राप का सम्मान किया जाए, परेशान मत। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ। मैंने कहा कि संस्कृत वाङ्मय में सूत्र रूप में बातें उपलब्ध हैं। आपको यदि उनको पढ़ना आता है, आपको यदि उनको जोड़ना आता है, जान जाए, सीख जाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल देकर और अपनी बात पूरी करूँ। जब भी तो बोलने में लगभग समय भी मेरा हो ही चला है। ऋग्वेद हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि धरती घूमती है, धरती सूर्य के चारों ओर घूमती। लेकिन पश्चिम में लंबे समय तक ये कहा जाता था कि सूर्य धरती के चारों ओर घूमता है। बाद में गैलीलियो और कोपरनिकस का क्या हाल हुआ पता है सबको। बाद में मैंने ऋग्वेद पढ़ा तो ऋग्वेद में पहले आया है कि सूर्य घूमता है। यार सूर्य घूमता है तो कोपरनिकस और गैलीलियो भी पहले वो लोग भी यही कहते थे कि सूर्य घूमता है, तो हम और वो बराबर थे, गलत कहाँ होगा। लेकिन बाद में और पढ़ा कि धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, धरती के चारों ओर चंद्रमा घूमता है, और इसको गणित में यानी छोटा बड़े के चारों ओर घूमेगा, क्योंकि वो हम कुलपति के चारों ओर घूमते हैं ना, कुलपति जी हमारे चारों ओर नहीं घूमते क्योंकि वो बड़े हैं, हम छोटे लघु गुरु सिद्धांत। लेकिन बहुत में समय बाद अभी थ्योरी आ गई है कि सूर्य भी घूमता है। तो ऋग्वेद में दोनों, लेकिन हम जानते नहीं। ब्लैक होल पर, श्वेत व्हाइट होल पर हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग ने जो लिखी है वो उसी पर लिखी, लेकिन बताती क्या है, एक्नॉलेज नहीं करते। उसने एक्नॉलेज नहीं किया कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है क्या। कर देता छोटा हो जाता ना। इसी प्रकार से उसने जो अंतिम किताब की बेटी ने संपादित की 1920 में आई है, ब्रीफ आंसर टू बिग क्वेश्चन, उसमें भी हमारे यहाँ हम जानते थे, पता नहीं है। अपनी उस किताब में वो लिख रहा है यूनिवर्स नहीं है, एक ही ब्रह्मांड, बहुत है। के शास्त्रों को टटोलिए। जैसे ही रामदास शर्मा बड़े विद्वान ग्रीक लिटरेचर को, जैसे ही वो वेदांत के दिमाग की बिजली जल गई। हाँ?
Thank you very much, sir, for enlightening us on artificial intelligence in such an interesting and thoughtful manner. Next, I would like to invite our esteemed guest of honor, scientist F. Ajay Kumar, Additional Director, DefiDoc, DRDO, New Delhi, to express his views in front of the gathering. Please come. Good afternoon, respected Vice Chancellor and Professor M.K. Gupta sir and Professor Mukesh Kumar Sharma sir and our keynote speaker Professor J.C. Bansal sir and our distinguished speaker Dr. Professor Paman Kumar Sharma sir and Dr. Kumari Saru. ये मेरे लिए बहुत ही हल्का विषय है कि आज जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, जहाँ ही बेंच पर मैं बैठ कर पढ़ता था, आज मुझको जो है एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ इनवाइट किया गया है। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं जो ये आपकी कॉन्फ्रेंस है, वर्कशॉप इंटरनेशनल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रंटियर्स, इनोवेशन इन आपका जो इनोवेशन इन साइबर सिक्योरिटी, फजी ऑप्टिमाइजेशन एंड सिमुलेशन, मैंने है कि सबसे पहले मैं आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ सोशल साइंस इमीडिएट कि timely intellectually stimulating this conference. The convergence of mathematical, artificial intelligence and cyber security and fuzzy logic. ये how to integrate the all these three items कि हम इन तीनों आइटम्स को कैसे प्रोग्राम पर लाया जाए। तो यहाँ जो भी रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए चैलेंज है कि हम की जो फजी आज मैं सुबह कल की बात है, कल मैं एक मकान देखने के लिए गया नोएडा में, तो भरोसा मिलता है, तो मेरा छोटा बेटा इस क्लास में है, कहने लगे पापा ये क्या मेरे मकान का नक्शा है, कहने लगे पापा इसमें ये तो ये ऐसी लगी है, ये दीवार आ रही है, और ये पूरी तो हाईटेक की सपोज करो कि हम जितना भी इसमें आर्टिफिशियल यूज किया गया है इंटेलिजेंस जो है, सपोज हम कमरे में है और जो है आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी चली गई तो सब बंद हो जाएगा। फिर कैसे पता लगेगा नीचे जो गार्ड को कि हम हमारे रूम का है जो हमारे फ्लैट है, तो हमें कैसे पता पड़ेगा? मैं आंसरलेस कि जो है जब आप रूम से निकलोगे तो आपका जो है आप कैसे बाहर निकलोगे? कोई आग लग जाए, कुछ हो जाए जो है, तो वो कहता है कि बेटा तो पापा ये तो अजीब हो गया। मैंने कहा बेटा सही कह रहे हो कि आपको ये है कि हमें जो हमारे फजी कंट्रोलर्स कि हमें कैसे डिजाइन करने हैं आज की सिचुएशन को देखते हुए, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से खड़ा हो रहा है, डेली जो है 40-50 बिल्डिंग बनाई जा रही हैं। और जैसे कि आप अभी एक नई स्टडी आई है अर्थक्वेक के लिए जो है कि आप जो है जोन 6 में पूरा ये दिल्ली एनसीआर आ रहा है कि आपको कैसे डिजाइन करना है इन आर्टिफिशियल जो हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे यूज करें, कैसे एल्गोरिथम हम डेवलप करें, ये आपके लिए चैलेंज है। तो हमें जो है क्योंकि देखो आप लेक्चर बहुत सारे सुने हैं 5 दिनों में है कि कैसे कैसे करना है, क्या इनोवेशन चल रही है, तो आपको जो है हमेशा जो है आपको क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, सिविल रिसर्चर हैं और ऑल आर यंग साइंटिस्ट कि आपको इस तरह से सोचना है कि हमें कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे दें जो ह्यूमैनिटी के लिए है। आजकल हम ह्यूमन को टेस्ट करने के लिए बहुत टेक्निक डेवलप कर रहे हैं। डेटा का काम ये है कि कैसे टेस्ट किया जाए, सुई से लेके जो आर्म फोर्स के लिए जो है हम मिसाइल, टैंक, हथगोला बम ये जो है आपका जो है न्यूक्लियर बम ये सब बना रहे हैं, लेकिन इसको ऐसा आजकल अभी सर ने बात की थी ड्रोन की, क्योंकि जो आजकल जो हमारे जो युद्ध होंगे वो है वो ड्रोन बेस्ड है, लेकिन इसमें भी अभी कुछ दिनों में ये भी टेक्नोलॉजी जो है ये भी कारगर नहीं होगी हमारी सुरक्षा के लिए। आप सभी लोगों ने एक साउथ की मूवी देखी होगी मक्खी, तो मक्खी में क्या था कि हमें कुछ चीजें ऐसी डेवलप
क्योंकि ऐसी चीजें डेवलप हो रही हैं कि जो आने वाले समय में एक मक्खी की जैसी छोटी होगी, वो आपको प्रोग्राम होगी इंटेलिजेंस जो है कि आपको किस व्यक्ति को कहाँ पे टच करना है, वो जाएगी आपके आज मुझे पता नहीं चल पाएगा आपको, ना ही आपको सेंसर प्रोटेक्ट कर पाएंगे कि हमें चारों तरफ ये अपना श्योर करना है कि हम किस तरह से एक इसको जो है दुनिया को ले जा रहे हैं। हमें ये सोचना होगा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज है कि एक कंस्ट्रक्टिव वे में करें। आज क्या है कि हम आज बच्चे जो पढ़ता है वो क्या करता है कि अपना होमवर्क दिया और क्वेश्चन देखता है, चैट जीपीटी जाता है और सॉल्यूशन मिल जाता है। आज क्या है कि हमारी थिंकिंग पावर जो है कम होती जा रही है। जैसे पवन सर ने बहुत अच्छे एग्जांपल दिए आध्यात्म, जो संस्कृत है, संस्कृत जो है अपने आप में बहुत बड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज है कि जिसका अगर आप सही स्टडी करें, आप जब मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र एक होती है शब्द लक्षण शक्ति जो है, शब्द शक्ति। आप देखिए जब आप शब्दों में ही आपकी शक्ति भी होती है। जब आपका कोई गेस्ट आता है या बुलाते हैं, आपके गेस्ट को बुलाए, कहते हैं अरे आ गया, एक नेगेटिविटी फैलती है। या आपने कोई गेस्ट आया, आपने कहा आइए जी खाना खाइए, बैठिए, प्यार से बैठे, तो उसके मन में जो है अगर आपको दुश्मन भी है तो उसके मन में भी एक क्या भाव जागृत होते हैं कि प्यार का भाव जो ये क्या कि आपकी जो देखिए इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कभी भी ह्यूमन को बीट नहीं कर सकती, चाहे कितना भी आप रिसर्च कर लीजिए। सबसे पहले है कि देखो डर लगता है भाई वो डिसीजन फास्ट ले सकती है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसको डेटा दे कौन रहा है? ये सब किस पे डिपेंड है? अपने डेटा पे डिपेंड है। जितना डेटा एक्यूरेट होगा डिसीजन मेकिंग उतना परफेक्ट होगा। आज के युग में क्या है कि जितने टेराबाइट में जो है गीगाबाइट में जो है डेटा जनरेट हो रहा है, अभी भी जो हम बैठे हुए हैं न जाने कितने गीगाबाइट डेटा जनरेट कर रहे हैं अपने जो व्हाट्सएप से। आजकल जो है व्हाट्सएप में बहुत लिंक हुई है कि जो अननेसेसरी ज्ञान हमारे पास आजकल तुम देखते हो कि जब हमारे पास जो है कि वो आता है ना कि हेल्थ के लिए हर किसी की वीडियो पड़ी है कि आप ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, लेकिन हमारा सबका शरीर का एक अलग जो है रेशनिंग पावर होता है। जो बोर्ड भगवान ने बनाया है हमारा, इससे कॉम्प्लेक्स सिस्टम कोई नहीं है। यह है जो न्यूरल नेटवर्क वगैरह जो है चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, अभी तक ऐसा सिस्टम नहीं बना कि भाई हम, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उससे हम अपना डिसीजन मेक करते हैं कि भाई आज अभी भी क्या है डब्ल्यूएचओ क्या करता है कि अपना ये सैंपल लिए कि आज के टाइम में जो है शुगर लेवल नॉर्मल है तो ठीक है, कि अब कुछ बात में आएगी कि शुगर जो है मिनिमम जो है 110 होनी चाहिए, अभी सेम भी है, लेकिन आज के टाइम में जो है 90 100 के आसपास शुगर सभी की है। क्यों? हमारे फिजिकल पर तो रहा नहीं, क्योंकि हमें ये देखना है कि हम अपने डेटा को कैसे यूटिलाइज करें। जैसे कि मैं डेटा में काम करता हूँ तो डेटा में जो है हर तरह की रिसर्च होती है, इसमें कि आपका फूड से लेकर टेक्निकल फूड से लेकर अपना जो है डिफेंस के जो आर्मी सिस्टम के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है क्रिटिकल लाइफ में होने की, वो सब डीआरडीओ डेवलप करता है। और मैं इसी के साथ जो है ज्यादा समय नहीं हुआ आपका जो है, क्योंकि अभी हमारे जो केपी सर हैं वो आपको डिटेल में बताएंगे। जैसे सर ने बताया था कि हाँ मैं एक एग्जांपल दूंगा सर कि सर ने बताया कि हमारा जो ज्ञान है वो पश्चिम में क्यों गया, उसके पीछे हमारी कमियां रही, क्योंकि हमने अपने जो हमारे पास ज्ञान शास्त्र हैं हमारे पास कोई कॉपीराइट नहीं। हम कहते हैं कि उन्होंने चुराया नहीं है उन्होंने, कि उन्होंने उसका जो है एक्सेप्टेबल नहीं किया, उसमें भी हमारा ही फॉल्ट है। हमने जो है अपनी एजुकेशन को सिंपल करके रखा हुआ है। हम ये नहीं चाहते थे कि हमारी एजुकेशन हर किसी को मिले। जैसे मैं बताता हूँ, मैं रियल बता रहा हूँ, मैं जब मैं एमफिल कर रहा था, मैं प्योर मैथमेटिक्स में मेरा कमजोर था, बताता हूँ आपको। मैं अप्लाइड में करना चाहता था प्रोजेक्ट, लेकिन मेरे को अप्लाइड में प्रोजेक्ट नहीं था। आई एम थैंकफुल टू प्रोफेसर एमपी गुप्ता सर, टोपोलॉजी में कराया, टोपोलॉजी में सर जानते मेरी हेल्प कैसी थी। लेकिन मैं बता दूं आपको, लेकिन जब मैं थर्ड मेरा जो है फोर्थ सेमेस्टर में जो है सर की गाइडेंस में जो है सर ने मुझे पढ़ाया, एक्स्ट्रा क्लास ली, और सर के कारण जो है मेरा सबसे पहले गेट क्वालीफाई हुआ। सर आई वाज द सेकंड पर्सन इन दिस डिपार्टमेंट कि मेरा गेट क्वालीफाई हुआ।
मैं ज़्यादा लोगों से मिलता नहीं था, तो किसी ने कहा कि भाई हमारे सीनियर हैं, अजय का गेट क्वालिफाई हो गया, किसी ने जूनियर है, चलता रहा। उसके बाद मेरा नेट क्वालिफाई हुआ जेआरएफ। उस टाइम जो है जेआरएफ जो है कदम पर करते हैं यहाँ पे, तो मेरा जो है हमारे 4 क्लास एकदम बिहार की क्लास में, हम 4 हैं। एक वहाँ भारती बंसल थी, एक मैं था, एक रूपेन प्रताप और एक जो है तोमर जी थे हमारे उसमें हिंदू में है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब आप ज्ञान बांटो, ज्ञान बांटने की चीज होती है, इसको समझने की नहीं होती है। हम क्या करते हैं कि भाई ये मेरी नॉलेज है कि इसका जो फॉर्मूला है ये पास चला जाए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक हमारे सीनियर थे, नाम नहीं लूंगा, कि जब नेट का एग्जाम होता था तो मैं एक क्वेश्चन आता था इस पे मैट्रिक्स थ्योरी पे, तो उसमें आइडियोलॉजी दी थी कि इसका ट्रेस निकालना था। तो मैं सर ये क्वेश्चन आया था, मुझे समझ में आया नहीं कैसे, कह ले ये तो अपना है। मैं आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उस दिन लाइब्रेरी गया, मुझे टाइम नहीं मिलता था लाइब्रेरी का। मैं बताऊं, मैं क्लास करके मैं अपनी एजुकेशन में खुद एक बार की मैं फीस के लिए जो है मैं ट्यूशन पढ़ाता था, शाम को आता था तो लाइफ टाइम मिलता नहीं था। मैंने पहला सेमेस्टर मैंने काउंसिल किया, मेरे गाँव में पड़ता है, यूनिवर्सिटी के 6 किलोमीटर पीछे ही है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि यूनिवर्सिटी में क्लास चलती है। आया तो मैं लाइब्रेरी गया, मैंने मैट्रिक्स थ्योरी की भी किताबें थी, सुबह से लेकर शाम तक ढूंढता रहा। एक छोटी सी बुक मिली मैट्रिक्स थ्योरी, उस बुक का आप यकीन नहीं करेंगे, प्रीफेस से लेके और लास्ट तक मैं 1 to 1 लाइन गया। और जब उसका सार निकला, मैं सर के पास गया कि मैं कहा सर आप मेरे से मैट्रिक्स से पूछ लो, और क्या लेंगे, लेकिन जब हमें उसका स्टेटमेंट मालूम नहीं था ना, मैं एप्लीकेशन करते क्या, तो मेन चीज है कि आपको नॉलेज तो है, लेकिन नॉलेज का आप लाइफ में कैसे इस्तेमाल करते हो, इंपॉर्टेंट ये चीज होती है। नॉलेज एक्वायर करने वाली बात है, लेकिन नॉलेज को प्रैक्टिकल उसमें लाना एक अलग चीज होती है। तो हमें ये है कि देखो रिसर्च हम आज करते हैं, लेकिन उस रिसर्च को या इनोवेशन को टेक्नोलॉजी में होने के लिए जो है कभी-कभी जो है 100 डेज लग जाते हैं। जो फजी लॉजिक मेरे को लगता है कि फजी कम से कम टेक्नोलॉजी होने में कम से कम 100 डेज लगे होंगे सर। जो फजी के आपका जो है फजी टोपोलॉजी या फजी ये जो है प्योर मैथमेटिक्स में आता था, लेकिन धीरे-धीरे कन्वर्ट हुआ टेक्निकल कन्वर्ट होगी। आज के जब आप ये फैन देखते हो, जो इनके जो कंट्रोलर होते थे पहले कट करते थे 1 2 3 पे, लेकिन अब क्या है आपका 0 में होता है, स्मूथ चलते हैं तो किस पे हो, तो फजी लॉजिक पे जो है आपका। तो आपका ये देखिए कि हम अपनी सोसाइटी क्या दे सकते हैं रियल लाइफ में। जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है कि आप उस प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम है उसको फॉर्मुलाइज कीजिए और उसको आप रियल लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होता है तो उस क्वेश्चन का आंसर एग्जिस्ट करता है। वो ये है कि उसे मैं नहीं जानता, उसे जानते हो, वो नहीं जानते, उसे जानते होंगे। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन आ रहे हैं धीरे-धीरे, एप्लीकेशन जो आपने ऑप्टिमाइजेशन क्या है, हर चीज़ों को, कुछ चीज़ों को आपको ऑप्टिमाइज करना होता है। तो मेरा यही आप लोगों से गुजारिश है, जो स्टूडेंट्स हैं, कि वो नित्य सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कोशिश करते रहें कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। जब तक आप क्वेश्चन करने की अप्लाई नहीं डालेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले लीड है क्वेश्चन करना। ये आदत मेरे अंदर नहीं थी, मैं बता दूं आपको। मैं बैठता था, क्वेश्चन नहीं पूछता था, तो उसमें कमी रहती थी। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तब तक आपको आपकी समस्या का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा 9th में 6th में है। बड़ा बेटा किसी कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, कुछ नहीं, अपने आप रहता है, मस्त रहता है। लेकिन छोटा बेटा ये क्यों, ऐसा क्यों। मैंने अभी घर में जो है दीवार लगा दिया मैनुअली पीरियोडिक टेबल जो है बड़े बेटे के लिए, क्योंकि उसके बाद केमिस्ट्री बेस है वो। तो बड़े बेटे ने तो उसमें 4-5 मिनट याद किए। 2 दिन बाद छोटा बेटा आया, पापा मैं आपको ये टेबल सुनाऊं? बेटा ये नहीं, मैंने याद कर लिया। कह रहे मैं आप वो लगाइए टाइमर,
लगा तो उन्हें 1.15 मिनट में जो है उसको सुनाया। फिर उसने कहा पापा मेरे को लगा दो व्हाइट बोर्ड जो है, व्हाइट बोर्ड लगा दिया। तो अगले दिन उसने जो है पूरा जो उनके एलिमेंट बनाए याद नहीं हुए, उनकी स्पेलिंग ऐसी है, नाम ऐसी है, पूरा लिख के उसने जो है वो दिखाया उसको विद स्पेलिंग जो। तो मैं ये कहता हूँ कि ये आपकी क्यूरियोसिटी जब तक आपकी सीखने की आपके अंदर क्षमता नहीं होगी तो आपको ट्रेन नहीं कर सकता, आपको मोटिवेट कर सकता है। सबसे पहले है सेल्फ मोटिवेशन। तो मैं इसी के साथ जो है आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत टाइम नहीं है। तो इसी के साथ मैं पूरे डिपार्टमेंट का इस उसके धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे एज ए गेस्ट बुलाया। और धन्यवाद। Much. We deeply appreciate the valuable perspectives you have shared with us. And now I would like to ask our research scholar, Mr. Tarun, to formally introduce our revered chief guest, Dr. K.P. Singh. Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone. It is my honor to introduce Dr. K.P. Singh, currently serving as an associate director in the Directorate of Extramural Research and Intellectual Property Rights, DRDO headquarters, New Delhi. He holds an MSc in Zoology, a PhD, and an MLIC from the University of Delhi. Dr. Singh has over 30 years of experience in senior, administrative, and financial management roles. He previously served as the director of the National Medical Library, DGHS Ministry of Health, from 2015 to 2019. At DRDO, he handles policy matters on IPR, promotion of IPR culture, coordination with ministries, and monitoring major national research projects, including their technical and financial progress. Earlier, he worked at the National Institute of Immunology and served as chief librarian at AIIMS New Delhi, where he redesigned and developed their advanced medical library system. He has authored 57 research papers, edited 5 books, and is actively involved in national and international professional associations. Dr. Singh has also completed numerous specialized certificate courses and has received several prestigious recognitions, including the Lifetime Achievement Award 2023, HALA Librarian of the Year 2019, Village Visionary Award 2017, Medical Library Leadership Award 2017, and the Young Librarian Award 2010. Please join me in welcoming Dr. K.P. Singh. Good afternoon to all of you. Honorable Vice Chancellor of this university, Professor Sangeeta Shukla, Professor Shivraj Singh ji, Professor Pawan Kumar Sharma ji, Professor M.K. Sharma ji, Dr. Ajay Kumar ji from DRDO, Professor J.C. Bansal Saab, Professor M.K. Gupta ji, Professor Mukesh Kumar ji, Professor Jayamala ji, faculty, staff, student, participant, ladies and gentlemen, good afternoon to all of you. First of all, I would like to congratulate Department of Mathematics to organize 5-day international workshop on AI, frontiers, innovations in fuzzy optimization, cyber security, and simulation with excellent objectives of workshop. I wish this 5-day international workshop to be grand success. Thank you so much. This is a really great privilege for me to be a part of this 5-day international workshop. Here, getting an opportunity to interact with researchers and academicians like you. Workshop designed to explore the emerging trends and application of AI with special focus on fuzzy optimization technique, cyber security, and simulation-based approach. The aim of workshop is to provide platform for researchers, academicians, industry experts, and students to engage with cutting-edge methodologies that integrate AI, fuzzy logic security framework, and computational simulation for addressing complex decisions, making optimization and protection of challenging modern systems. Because we are working in DRDO,
how we can help our students and teachers and researchers in this university. DRDO has many ways to collaborate with researchers. Being a funding agency, we are playing a crucial role like a bridge which is connecting the Indian researchers to real users. We always helping to researchers through grant aid to understand the technology, need and advancement of technologies. R&D has always played a significant role to show the strength, secure the image of and security of nation. Researchers engage in the task of improving R&D standards of India and efficient support system so that they can deliver tangible and intangible outcome. The achievement of any university to conduct a workshop or international conference, publish paper in national or international journals with high impact factor, produce IPR and prototype process methods and TOT to industry. I admire the effort of all organizers, volunteers who are involved wholeheartedly in this 5-day international workshop. This 5-day workshop not only help the faculties, researchers, scholars, students in learning new things, exchange knowledge and ideas, developing their education, research capabilities, and getting new ideas, but also ensure that formation of bridge between teachers, students, researchers, industry, and institution. मैं छोटा सा एक बात बताऊंगा आपको. अजय जी भी हमारे बोल रहे थे, सर हमारे गुप्ता जी ने भी बहुत अच्छा बोला और हमारे बंसल साहब ने बहुत ही अच्छा बोला कि हम थोड़ा लेट हो गए और मैं दो तीन स्लाइड देखा तो बहुत ही मजा आया क्योंकि मैं लाइफ साइंस का स्टूडेंट हूँ, जंतु विज्ञान का. तो जो आपका एआई है, मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, जो बच्चे स्टूडेंट काम कर रहे होते हैं टीम में, वो क्या रिसर्च कर रहे हैं, उसमें क्या कौन सा आईपीआर दिखाई दे रहा है, तो बच्चों को कोई आइडिया नहीं है, तो मैं बताता हूँ उसमें कौन सा पेटेंट है या कॉपीराइट है या डिजाइन है या ट्रेडमार्क है, तो उसके बारे में मैं जाता हूँ. तो जो अपना एआई है ये कैसे इसको अच्छे से कैसे हम डेवलप कर सकते हैं. हम मेरे ख्याल से एक टीम बनाएं 3-4 लोगों का, उसमें जिसका अच्छा फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो. ये जो एआई में है इसको ठीक से डेवलप तभी कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स. वो ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि सबको फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, मैथ भी आता है, हम तो बहुत पूरे हैं इस चीज में. तो ये सब होने से आपका प्रोबेबिलिटी कैलकुलस, डेटा एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं. हमारे टाइम में जब हम 90s में पढ़ते थे तो उस टाइम कंप्यूटर होता था 286. तो जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्लास में थे तो एक प्रोफेसर खांडे का डी स्कूल में कंप्यूटर साइंस का डी स्कूल बोलते थे. वो काफी बहुत ही लर्निड, मतलब बहुत अच्छा पर्सनालिटी था, बच्चे डरते थे उनसे. तो वो क्लास में आए और एक रजिस्टर लेके आए कि जिन बच्चों को कंप्यूटर साइंस पढ़ना है वो इसमें अपना नाम लिखेंगे. तो रजिस्टर आगे की लाइन से पीछे की लाइन तक जा रहा था, हम भी इसी लाइन में थे. तो किसी ने उसमें अपना नाम नहीं लिखा, तो उन्होंने देखा कोई नाम नहीं लिख रहा, तो उन्होंने देखा कि किसी ने आगे खिसका दिया, वो हमारे पास आया. हम सोचे यार किसी ने नाम नहीं लिखा, इसमें हम क्या करें. तो फिर उन्होंने एकदम से पूछी वाला कि जो स्टूडेंट साइंस पढ़े हुए हैं, जिनको साइंस पढ़ा हुआ है, मैथ, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये सब आता है, थोड़ा बहुत भी आता है, वो इसमें आप जरूर एंटर करें और मैं उनको कोशिश करूंगा सिखाने के लिए. तो हमने अपना नाम लिखा उसमें, सबसे पहला नाम था हमारा. उसके बाद पूरी क्लास में करीब 60 बच्चे थे, 60 बच्चों में 2 बच्चों नाम लिखा उसमें. 2 बच्चों नाम लिखा तो उन्होंने बोला कि आप डी स्कूल आ जाइएगा और वहाँ जो उस क्लास में जो दूसरे बच्चे थे वो बीएससी कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे प्रॉपर वे में, और हम लोग तो बिल्कुल ही कहीं पे भी नहीं थे. तो जैसे एक कंप्यूटर था, वो कंप्यूटर लैब बोलते थे उसको, 286 कंप्यूटर होता था, उसके ग्रीन वर्ड्स आते थे ऑन करने के बाद में, लाइन बाय लाइन. तो शुद्ध बाहर आ रहे थे, उसमें दिखाई देता है कैसे ऑन किया है, क्या चल रहा है, कैसे हो. तो हम लोग भी पढ़ते थे, तो उन्होंने पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रान वगैरह सब बताया. हमने वो जैसे बताते हम उसको नोट कर लेते, हम उसको डिक्शनरी में देखे वर्ड का मीनिंग नजर नहीं आ रहा. तो फिर हमने लाइब्रेरी में पूछा, मैंने ये वर्ड पढ़ा रहे थे, इसका डिटेल देखना है. तो उसने मेरे को बोले कि आप ये एनसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी देखिएगा या एनसाइक्लोपीडिक कंप्यूटर साइंस देखिएगा. तो वहां हमने पहले दिन में जितने भी वर्ड थे कंप्यूटर साइंस जो हमने सुने वहां पे सबको डिटेल में पढ़ा
उसके बाद धीरे 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 हमारे को कुछ समझ में थोड़ा आना शुरू हुआ और हमें लगा और वो हमने एग्जाम पास कर लिया। तो उसके बाद टीज के टाइम में कंप्यूटर पहली बार दिखाई दिया और आज हमारे हाथ में कंप्यूटर है, नेट भी है। तो उस टाइम क्या था कि रिसर्च मेथोडोलॉजी किताब ठीक से पढ़ा, देखने में उसमें क्या था, डेटा कलेक्शन, प्रॉपर डेटा कलेक्शन अगर आपका है, वो डेटा जो कलेक्ट 90s में हुआ था, उस डेटा का आज ठीक से यूज हो रहा है। वो हर फील्ड में हो रहा है। वो जेनेटिक्स के फील्ड में बता रहे सर बता रहे जेनेटिक्स के फील्ड में या एग्रीकल्चर के फील्ड में या फिजिक्स किसी चीज के फील्ड में वो जो है डेटा आज इस्तेमाल हो रहा है। जैसे अभी हम बता रहे थे कि रिडनी क्या है, बीपी क्या है, फलाना क्या है, ये क्या है, ये सब जो डेटा ऑलरेडी स्टोर है। कलेक्शन उस टाइम क्या था, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिसेमिनेशन। उस टाइम दो चीज था, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना लीजिएगा, डेटा एंटर कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, उसके बाद वही डेटा आज अच्छे से हम यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। जिसका डेटा उस टाइम पे अच्छे से कलेक्ट किया तो वो डेटा जो है आज अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है। मैं अपना एक एग्जांपल बताता हूँ। जब डीआरडीओ में पता नहीं था डीआरडीओ क्या चीज है और जहाँ ये अजय जी काम करते हैं उस ऑफिस का नाम भी नहीं पता है, वो ऑफिस कौन है, कहाँ है, कैसे है। तो जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ रहे थे तो हमारे एक सर थे, उन्होंने एक स्टूडेंट को डीआरडीओ में किसी प्रोजेक्ट में भेज दिया चुपके से। आजकल तो वो प्लेसमेंट की टीम आती थी ना, उस टाइम हमारे टाइम में प्लेसमेंट ऐसा होता नहीं था और हमारे सब्जेक्ट में तो होता ही था खासकर। तो उसमें टीचर जो होते थे वो किसी अपने खास स्टूडेंट को कहीं ना कहीं भेज देते थे, तो वहां धीरे धीरे वो परमानेंट हो जाता था। तो मेरे को पता लगा कि एक लड़का जो है डीआरडीओ में चला गया है। तो चला गया तो मैंने कहा यार मेरे को जाना चाहिए था, मेरा तो एमएससी है। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ कि मेरे को जरूरत भी थी और हम तो गए नहीं वहां पे। तो अपने अंदर कुछ अलग चीज है। तो मैं डीआरडीओ के जिस बिल्डिंग में आजकल हम हैं उसके गेट पे पहुंच गया कि यार वो लड़का कैसे चला गया। वहां अंदर एंट्री किसी की नहीं है। हम वहां बाहर 2-3 घंटे बैठे थे रिसेप्शन पे, बाहर धूप में, गर्मी के दिन, जून का महीना था। अंदर बाहर ऐसे होते थे, लंच का टाइम आ गया। तो लंच में बहुत सारे वहां स्टूडेंट थे, मतलब ये जो कई साइंटिफिक में, तो बच्चे बाहर निकल के आए, बहुत सारे बाहर आए। उन्होंने कहीं छोले कुलचे सोडा कुछ खाया, बाहर भी अंदर वाला अलाउ नहीं था कैंटीन जाना। उन्होंने बाहर कुछ खाया, हम भी उसके साथ चोरी से बीच में झुंड में घुस के अंदर हो गए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको। तो हमने ढूंढा कि भाई कहाँ प्रोजेक्ट है, किसके पास में है। तो जहाँ अजय जी हैं उसी ऑफिस में मैं आज बता रहा हूँ ये, वहाँ एक डॉक्टर योगेंद्र सिंह थे। तो मैंने किसी को पूछा भाई यहाँ पे चल रहा है। उन्होंने सोचा कि भाई इनको बुलाया वो जब अंदर आ गए, मैं उनके बाद चुपके से चला गया। मैंने उनको बायोडाटा दिया, 3 पेज का बायोडाटा था। तो देखा यार तो यार ये पढ़ा हुआ अच्छा पढ़ा हुआ है। तो सब ठीक है। उनको ये नहीं पता कि मेरे को किसी ने भेजा नहीं है, क्योंकि वो तो उसको ले लेते, उनको भेजा किसी ने। उन्होंने बायोडाटा पकड़ा, कहते ठीक है आप बैठिएगा और पहले काम करो, आप मैं पास बनवा देता हूँ। मैंने इससे बड़ी बात ही नहीं है। उन्होंने जो है मेरा बायोडाटा देख के और मेरे को 1 महीने का पास बना दिया कि ये ले जाना, पास बनवा के 1 महीने जा जाना। उन्होंने 10 मिनट के अंदर बोले कि रुको मैं खाना खा लूं और उसके बाद मेरे पास आओ। तो अभी हम डेटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं। डीआरडीओ में डेटा जो एक होता है माइक्रोफिश, शायद आप लोगों ने किसी से देखा होगा। माइक्रोफिश 3x5 इंच का होता है और एक माइक्रोफिश के अंदर 50 या 51-52 पेज होता है। वो एक छोटा सा ऐसे पेपर उसमें होता है, उसको एक मशीन में लगा के वो पूरा पेज दिखाता है और उसके अंदर टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, कुछ कीवर्ड्स, ये सब होता था। तो उस डेटा को कन्वर्ट करना था ऑफलाइन और फिर दूसरे कंप्यूटर में उसको करना था। तो वो यार ये बहुत सही चीज है। तो उसने बोला कि आपको इसका 7 रुपया पर सीट देंगे और आप इस काम में लग जाइएगा। ठीक है, पैसा मिलेगा। तो 3 महीने हमने वहाँ पे काम। तो कलेक्शन ऑफ डेटा जो है ना प्रॉपर वे में, वो आज वो कह रहे रिपोर्ट थी, किसी दूसरे कंट्री की रिपोर्ट थी, हम खरीदते थे वो लोग ऑफिस वाले। तो वो डेटा आज भी हमारे पास में और वो सब यूज हो रहा है। तो 90s में डेटा कलेक्ट किया हुआ आज जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं। अभी 90s में डेटा कलेक्शन करते थे, आज एआई आ गया। देखिए जो स्टूडेंट हैं ये एआई में काम कर रहे हैं और हम लोग डेटा कलेक्शन में काम कर रहे थे। तो कितना बड़ा डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी बात है। जो आप एआई में आज हैं तो 30 साल बाद आप कहाँ जाएंगे। अभी हम तो डेटा कलेक्शन होने के बाद में एआई आज देख रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। प्लस दूसरा, अभी मैं लास्ट वीक एक यूनिवर्सिटी में गया था, तो वहाँ कुछ डिपार्टमेंट में करीब 10-15 ग्रुप से मिला। स्टूडेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
यहाँ भी कर रहे होंगे, सभी जगह कर रहे हैं, लेकिन लैक ऑफ गाइडेंस की है वहाँ पे। सपोज आपने अभी एक स्टूडेंट का मैंने देखा, उसका एक इक्विपमेंट था जो करीब 10 फीट ऊपर उड़ रहा था कि मैं इसको तैयारी कर रहा हूँ कि इसमें एक आदमी बैठ के ये लैंड कर सकता है। तो उसका जो मैकेनिज्म था उसमें देखो फिजिक्स वाले लोग भी थे, केमिस्ट्री के लोग भी थे और मैथमेटिक्स वाले लोग भी थे। तो टीम सभी मैंने उनको ये बताया कि आप इस टीम में अगर ये 5 लोगों की टीम है, इसमें अगर कोई दूसरा स्टूडेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, शायद वो उसका आइडिया कुछ अलग निकल आए, आप उसको इसमें बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी इन्वेंशन में आपको इक्वल राइट है। मैंने बताया था आईपीआर में अगर मान लिया एक स्टूडेंट का फिजिक्स का है या केमिस्ट्री का है या मैथमेटिक्स का है, कंट्रीब्यूशन बराबर है या कुछ कम भी है, हो सकता है कि जो स्टूडेंट कम जानता हो उसका कंट्रीब्यूशन वो ज्यादा हो, आइडिया उसी का हो। तो आप उसके आइडिया को लेकर सभी लोग उसमें ये मत समझे कि मेरा नाम 4 नंबर है या 5 नंबर पे। आईपीआर में इक्वल राइट होता है, फर्स्ट नंबर का भी और लास्ट नंबर का भी। इंडिया में दिक्कत ये आ रही है कि आईपीआर में सबको इक्वल राइट है, तो जो बॉस होता है, अगर हम कोई फाइल मूव करते हैं किसी इंसेंटिव के लिए कि भाई ये इनका पेटेंट है और इनको हम 2 लाख रुपए दे दें, तो 2 लाख रुपए जब डिवाइड होगा तो ऊपर से देखो जब बराबर होगा। तो जो बॉस हैं वो उसको वो बराबर नहीं ले सकता, इसीलिए उसको वो पीछे हटा देते हैं। तो हमने बोला कि देखो ऐसा ना करें, क्योंकि कोई टेक्नीशियन है या टेक्निकल असिस्टेंट है या रिसर्चर है, उसका आइडिया है और आप उसके एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैं, तो आपके सपोर्ट से ये हो रहा है। तो लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो तो यूनिवर्सिटी की या इंस्टीट्यूट की है, उसी की रहेगी। स्टूडेंट तो अपना 10-20 हजार रुपए लेकर जाएगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो 20 साल तक या 15 साल तक या 10 साल तक जो भी है वो आपके पास रहेगा। आप उसका यूज कर सकते हैं और आप उसको मार्केट में टीओडी करा सकते हैं और इंडस्ट्री को दे सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा ना बोल के, क्योंकि बहुत अच्छे वक्ता आए हैं और आप लोग बोर हो गए होंगे 5-6 दिन सुन के, बोर या आपने कुछ फायदा उठाया होगा, तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं विराम लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और एक बात और कहना चाहूंगा, आज मेरा आने का प्रोग्राम था नहीं पिछले कई दिनों से, तो फिर अपना यूनिवर्सिटी का नाम सुन के तो थोड़ा एकदम हिम्मत आ जाती है। तो मैंने कहा यार चलो चल रहा है तो कोई बात नहीं है। बट मेरा ये कहना है, आप बुलाएं, कुछ यहाँ ना बैठाएं, उधर बैठाएं और कुछ मतलब दूसरी सुन लें, ठीक है ना। रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक वॉल्यूम का 26 वॉल्यूम का बुक पढ़ा हुआ है, उसमें वो जबरदस्त है। सैम्पलिंग का अलग से है, कोरिलेशन का अलग से है, रिग्रेशन का अलग से है। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको वास्तव में रिसर्च करने का आइडिया अपने आप में आ जाएगा। वो आपकी लाइब्रेरी में होगी, वो बहुत अच्छी किताब है। और देखिए हम बात करते हैं हाइपोथेसिस का। हाइपोथेसिस हम 1-2 चीजें देखते हैं ना, नल हाइपोथेसिस, दूसरा हाइपोथेसिस 13 टाइप का है, टेस्ट भी वो टाइप का है, टी टेस्ट है, फलाना टेस्ट है। आप देखेंगे तो आप भरमार है। अगर आप जितना आप पढ़ते रहेंगे तो आपके अपने आप में ही आइडिया आपको जनरेट हो जाएगा। जब आइडिया जनरेट होगा तो आप अपने आप ही कुछ न कुछ कर डालेंगे तो जो है आप सक्सेस हो जाओगे और आप कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है, जो प्लॉट नहीं खरीद सकता, उसका डबल हो जाएगा। लेकिन जिसके पास ये है, तो इसमें भी बहुत लोग, हमारे हिंदुस्तान के लोग जिनको यहाँ अपने आईपीआर पे कुछ नहीं मिल रहा था, उन्होंने पीसीटी फाइल किया। पीसीटी मींस अपने पेटेंट को दूसरे कंट्री में फाइल किया। वहां का रॉयल्टी उनको इतना मिलता है कि वो हम सोच भी नहीं सकते। हमारे पास रूम है, कम से कम 5000 फाइल है, जो सब तरह के आईपीआर है। आईपीआर में सॉरी पेटेंट भी है, कॉपीराइट भी, डिजाइन भी है, ट्रेडमार्क भी है और सब कुछ है। तो मैं देखता रहता हूँ सब चीजों को। लेकिन अगर आपके पास है, 2-3 लोगों के पास है, टैलेंट है, आप सर्च करिए, देखिए। देखिए आपके इस यूनिवर्सिटी में भी कुछ एब्स्ट्रैक्टिंग सॉल्यूशंस आती हैं। फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट है, मैथमेटिक्स में भी आती है, केमिस्ट्री में भी आती होगी। आप उस वीकली डॉक्यूमेंट है, आप उसको उसका टाइटल और उसका एब्स्ट्रैक्ट आप देख लेंगे क्या फाइंडिंग्स है, तो आपके अंदर 10 दिन के अंदर ही आइडिया हो जाएगा ये क्या आइडिया है। ठीक है, आप उसको कंपैरिजन करेंगे, फिर आप उसको उसका फुल पेपर देखिएगा। वो देखने में कि हाँ क्या हो रहा है, तो आपके अंदर लगातार आइडिया आता रहेगा और आप एकदम सक्सेस हो जाओगे और फिर आप कुछ भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जय हिंद। Respect and admiration, we thank you, sir, for sharing your knowledge and experiences with us.
We hope to receive your continued guidance and support in our future endeavors. At this session, where we celebrate the outcomes of our collective efforts, it's a great privilege for me to invite our respected ex-pro Vice Chancellor and Senior Professor of our department, Professor M.K. Gupta, sir, for presidential address. सभी को प्रणाम। मंच पे आसीन साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से आए प्रोफेसर बंसल, मेरे अनुज और इसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मेरे छोटे भाई प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा, DRDO से इसी विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट डॉक्टर के सिंह जी, आप इसी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हुए हैं, ऐसा मैं ठीक कह रहा हूं सर? हमारे अपने छात्र, हमारे स्टूडेंट 2000 में हमारे साथ यहाँ जन्म थे, ऐसे डॉक्टर अजय कुमार विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता, प्रोफेसर जयमाला जी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिष्ठाता, प्रोफेसर राकेश कुमार शर्मा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिष्ठाता, प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा, हमारे मेरे अनुज प्रोफेसर शिवराज सिंह, इस विभाग के वर्तमान में अध्यक्ष प्रोफेसर मुकेश कुमार शर्मा, इस कार्यक्रम को संचालित करने में सहयोग प्रदान कर रहे प्रोफेसर डॉक्टर स्वरूप कुमारी और संदीप कुमार, दोनों ही हमारे स्टूडेंट हैं, दोनों ही हमसे पढ़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों ने आज मैं तो दुर्भाग्यवश कहो या किसी आवश्यक कार्य की वजह से कहो, मैं पहला फंक्शन अटेंड नहीं कर पाया, मुझे आवश्यक कार्य से बाहर जाना था, मैं उसमें नहीं रह पाया 2 तारीख को। आज मैंने वक्ताओं को सुना, हमने देखा कि हमारे पवन जी ने किस प्रकार से आर्टिफिशियल को हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ा। ये जिस चीज को भी आप देखते हैं, आप पाएंगे, बिल्कुल मैं उनके 100% उनके साथ हूं इस मामले में। आप लोगों को जोड़ना सीखना चाहिए, किस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण का बल के बारे में भ्रांतिपूर्वक न्यूटन को क्रेडिट चला गया, हम सब न्यूटन का नाम पढ़ते हैं, और जिस संबंध में इन्होंने थोड़ी कमी बताई अजय कुमार जी ने कि जब हमने कॉपीराइट नहीं लिया तो उसको क्लेम कैसे करें, उस पर भी विचार करने की जरूरत है। अगर एक कॉपीराइट लिया होता और उस संदर्भ में आपने बताया प्रोफेसर पवन जी ने, क्योंकि क्या करते थे, आप लिख लेते थे बाद में। हम लोगों का ज्ञान परंपरा ऐसी रही है कि एक बात से दूसरे पे जाती है, मुंह से बताया चलती रही। ऋषि मुनियों की परंपरा यही थी, जिसको हमने, यद्यपि वेद हमारे बहुत पुराने हैं, उसमें बहुत ज्ञान लिखा हुआ है, लेकिन जो जिस तरीके से वर्तमान व्यवस्था है उसमें हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए। लेकिन हमें इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि हम आगे थे। आपने भी देखा प्रोफेसर बंसल ने बहुत ही सुंदर तरीके से कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस को बताया। इट इज द बैकबोन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सभी, मेरा मानना है कि सभी लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समाव करने में थोड़ा बहुत यूज करते हैं। कुछ चिंता भी उत्पन्न होती है। पहले चिंता तो ये होती है कि अब विस्तृत ज्ञान की कोशिश करनी छोड़ दी है। कोई टॉपिक हो, उसमें देखो, चैट जीपीटी देखो, जेमिनी देखो, परप्लेक्सिटी देखो, और भी आपके पास टूल्स हैं, उन्हें देखो। मैंने 2-3 मास्टर क्लास भी करी, प्रोफेशनल बनने के कारण मुझे कई जगह एआई सीखने के लिए जाना था, गया, समझा, सीखा, देखा, और देखा इंदौर विश्वविद्यालय, इंदौर में जो आईआईटी इंदौर है, बहुत काम कर रहा है इसके अंदर, वो प्रचार भी कर रहा है। आपको भी पीछे नहीं रहना है, सीखना है एआई, लेकिन एआई से ऐसा ना हो कि पहाड़ भूल गए कैलकुलेटर आने से।
ऐसा ना हो, हमें अपनी नॉलेज, हमें वो ट्रेडिशनल जो है जो पढ़ के एक दूसरे को आगे बताने की गुरु जो हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा थी, एक बार पढ़ लिया याद हो गया, मेमोरी लॉस तो नहीं हो रहा, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमें सीखने की कमी तो नहीं आ रही, हमें सीखने की इच्छा उत्साह तो कम नहीं हो गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दूर नहीं रह सकते वर्तमान समय में, लेकिन हमें इस तरफ भी ध्यान रखना है और हमको अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य करते रहना है। आई होप यू मस्ट हैव लर्नड many techniques, new methods, skills, deep insight during your stay here for the last 5 days, and that you will use all these techniques wherever you work, from where you came. You will use these techniques to enhance your knowledge, to impart your knowledge to your juniors, to your student. आप लोग निश्चित तौर पर बहुत एनरिच होके जा रहे हैं, यही सबसे ज्यादा संतुष्टि प्रदान करता है। मैं इन सभी के साथ आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, मंच पे आसीन सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। I am Dr. Sandeep, convener of this workshop. So it is my pride honor to have been asked a vote of thanks in this validity session of this workshop. So first of all, I extend my sincere thanks to the Honorable Vice Chancellor, Professor Sangeeta Shukla ma'am, to encourage us for organizing this workshop in this department. I extend my sincere thanks to the chairman of this workshop, Professor Mukesh Kumar Sharma sir, head of the department of this workshop, for conducting this workshop in this department, and definitely the success of this workshop is indicating the strength, your strength, and good organizers for this workshop. And I am also thankful for you to inviting the various speakers from the different states and abroad. I express my sincere thanks to the Dean Faculty of Science, Professor Jamal ma'am, for your cooperation, for sharing your guidance with us throughout this workshop. I extend my sincere thanks to the organizing committee member, Professor Shivraj Singh, Dr. Suru Kumari, for guiding us and the cooperation throughout this workshop. I express my sincere thanks to the chief guest, Professor Dr. K.P. Singh, Associate Director, DRDO New Delhi, for accepting our invitation for the chief guest of this session and cooperating us for providing the financial support, and not only the financial support but also encouraging the for encouraging the conduct this workshop in this department. And I personally request to the head of the department for conducting a session in which they will provide other knowledge regarding to the IPR section and research methodology, etc. Because Professor K.P. Singh, not only the administrator, they have written 57 research papers
papers and different research books. Definitely his knowledge will be beneficial in the next event. Definitely in the next event, I expecting that he will not be the like a chief guest. He will be a speaker in the next event. I express my sincere thanks to the our the chief next chief guest, Professor Pawan Kumar Sharma ji. He is the professor in the political science department of this university, and presently working as the registrar in the University of National Sanskrit University, Lal Bahadur Shastri National University in New Delhi. And always he express the new aspects on the present topic and the relevant topics, and in the present day he established a relationship between the artificial intelligence and the knowledge systems. And he shows that how can we generate a new body from the natural body and the artificial body, right? But the personal because my job is to express the word of thanks. But personally, my view is that on this topic, that natural body plus natural body, right, definitely provide a natural body. But if you will find a body from the natural body plus artificial body, then definitely there is a body, but it will be defective. It has some defects. So that Sanjay Maharaj, right, definitely starting में कुछ उनको problems थी, है ना? और वैसे आज उन्हीं का दिन है संजय देव का, तो उनको सही रास्ते पे लाने के लिए, राइट, आप लोगों ने जाना कि कैसे हनुमान जी ने उनको सही रास्ते पे लाए थे और फिर देवत्व को प्राप्त हुए थे. तो डेफिनेटली यदि आप नेचुरल बॉडी प्लस आर्टिफिशियल बॉडी को से कुछ नया प्रोडक्शन लेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट जरूर आया होगा. Right, I am also thankful to our the keynote speaker, Professor J.C. Bansal from South Asian University. He has completed his PhD from IIT Roorkee, and his specialization is on the artificial neural networks, algorithms, particularly particle swarm algorithms. कुछ छूट गया क्योंकि हम जेसी बंसल सर का जो लेक्चर थे वो एक ट्रेडिशनल वे में सुनना चाह रहे थे, और डेफिनेटली नेक्स्ट इवेंट में हम ऐसा ऑफ करेंगे. बहुत शॉर्ट में सर को हम सुन पाए क्योंकि जो उनका स्पेशलाइजेशन है स्पाइडर मंकी एल्गोरिथम्स पर या पार्टिकल स्वार्म एल्गोरिथम्स की जो अलग एल्गोरिथम्स है, डेफिनेटली इट विल बी वेरी beneficial for the researchers, not only in the mathematics but also in the physics, chemistry and biology, zoology science. So we are very thankful for accepting our invitation, Professor J.C. Bansal sir. I extend my sincere thanks to the Additional Director DRDO, Dr. Ajay Kumar, for accepting our invitation and sharing his views during and experiences during their educational life and in the working areas. So we are very thankful for you. I am also thankful to all the faculty members of this university and the participants, and particularly those faculty members who are present in this workshop at this time in the physical mode, like Professor Shailendra Sharma, Professor Rakesh Kumar Sharma, Professor Hardanaran Singh, Dr. Kamesh Kumar, Dr. Ajendra Sharma from NIS College. So we are very thankful for your cooperation, for listening our speakers, and definitely you will get the benefit in the next future.
I'm very thankful to the media persons who are covering this workshop very carefully, and they are providing a bridge between the society and this department. So definitely we are very thankful to Mr. Amit Tiwari, Mr. Praveen ji, and Ms. Neha for covering this event and providing all the key words and the key sentences regarding to this event through the newspapers. And finally, I am very thankful, and my special thanks goes to the chain of the our volunteers, that covers the research scholars of this department, MSc previous students, MSc final students, and the graduate students. And particularly, I will take some names from this list. They are the Mr. Balaram, Mr. Lil Bhardwaj, Mr. Ashish, Mr. Tarun, Mr. Akash, Urmi Forwa, Neetu Vishwakarma, and Parul, Sneha, Darshika. There are so many names because without your contribution, without your coordination, right, we will not conduct this workshop smoothly. So we are very thankful on the behalf of the department and on all the organization team. We are very thankful to all of you. I'm also thankful to the each and everyone of this of the staff member of this department. With these words, right, I'm very thankful to all of you for attending this workshop and listening all the speakers very carefully. Thank you to all of you.
Record.
you.